to change the campaigns and ads and each and everything, and AI is building right now. So these two main questions are related to it. Would like to say, Okay. thank you very much. Okay, perfect, perfect. Very nice questions. I'd say that every question should be separately answered, but I'll give you the answer in a way that it makes more sense. Now, first option, we have different AI tools, or they've just put in the name of AI with every single tool that was already there. So, for example, I'll give you an example of the automation that you just mentioned, that we don't, what by my understanding, I think that the automation, and correct me if I'm wrong, the automation that you're referring to are the rules that we apply inside the campaigns, inside the ad settings that you're referring to, or are you talking about separate tools? Maybe he's Masood. Can you hear us? Right? Maybe he's having an issue. Okay, Generally, no worries, I'll go ahead. I'll give you yeah, a general example. For example, just to make sure we both are on pages, right? So, for example, I've started a campaign, right, and I want to put automated rules on it so that it saves a lot of time for me. For example, I put a rule that if I'm running a conversions campaign and I want e-commerce sales for my website, right, for any of the products. So the first thing I would want, of course, is that I know that I need to get my CPA should be a specific amount so that I'm profitable, so that my ROS is good enough to make me profitable after cutting out all of the amount. So in that, if I put a rule that okay, the CPA is more than, for example, more than $10 for this product, then turn off this campaign. Then of course, at an individual level, now here is the tricky part. As an individual level, you can apply it to your specific campaign. But the problem is the smart way to do ads today, right? Now we all have our experiences, and I believe all experiences are correct based on what you're selling, how you're promoting, and how old your ad account is, right? So if you put that rule, any specific rule on a campaign, it would apply to all of the creatives inside that campaign. I think that would, in my experience, that has minimized. It has not just like saved my money. Instead, I would say it has wasted a lot of time, because a lot of times your CPA goes high in start, but then later on it comes back to what you were actually looking into, right? So if you apply a rule, the campaign would shut it down immediately. So your campaign has stopped. You are expecting to get sales, and you realize the campaign is off. So you wasted a day for saving a few bucks. So I would not prefer putting any auto rule on that. Instead, I would, for example, right now in UAE it is 7:30 p.m. In Pakistan it is 8 p.m. This is, for me, in my experience, this is the peak time when I've got sales after like every 10 minutes or every 5 minutes. Literally my Shopify dashboard was ding, 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 ding. I was getting sales, right? So this is peak hour. But I know that there are specific hours during the afternoon when I would not get any sales. Or if I get any sales, the number of orders, the number of conversions would be really low, right? So instead of me wasting my budget on those specific hours, I would prefer to turn that campaign off manually. Again, I would not do it unless it is like night time. Of course, at that time I would apply that don't run ads from 2 a.m. to 6 a.m., right, according to GCC. But would want it. I would personally would do it manually if you ask me. So that would, in my experience, it gives you more control. And this, I think the second question that he asked was for machine learning. Machine learning. Perfect. So in terms of machine learning tools, by my understanding, what I could understand, they are, for example, I'll just talk about e-commerce right now, or any other tool. Like, let's make it simple. But in terms of e-commerce, Magitex is a very effective tool that a lot of people here are using for their campaigns. Some of my, you could say, friends, co-trainers also recommend them in their agency business. It has done wonders for them in terms of testing different audiences and whatnot. For me, in my experience, manual testing has been the more effective for me. I'll tell you why. Because if you're doing something in same niche, right, it is very easy to use tools. If you're doing it in different niches, even the tool will backfire for you. In my experience, it has, right? So if I'm on one side, for example, if I'm going niche based, if I'm just into e-commerce and I'm selling white label products that I'm either getting from any market or in a dropshipping platform, or a simple product, you know that, right? Every marketer in Pakistan, they first start with a white label product. Out of those
100 products, one product makes them in a winner, and then they become a marketer with this case study. Right? It's a rinse and repeat factor, right? But it is very necessary to understand that same strategy would not apply. The same machine learning would not apply to other niches or other specifically, things. It's not the same for each niche. That's what I'm trying to say, because CPAs are different, other things are different. If your system has made a base that if the ROS, if the cost the cost per CPA, right? If the CPA is at a specific amount, the system won't know that the CPA for another category would be at a different amount. You're getting what I'm saying? Yes. So that's why I'm not using any tool specifically for that. Yeah, there are possibilities. Like for example, since I'm doing like complete performance marketing now, Google a little bit. I take a little bit of help from SEMrush. I take a little bit of help from another tool that, of course, I would not name over here. But I think the tools are just for help and just to make your life easy. Creative is obviously the main thing, but in short, this is the answer. There can be complications if you lose some tools for the machine learning. The best way now, the best solution for this is just to put your test in with the creatives and nothing else. Just test different creatives. Right. That is the key, nothing else. Everything else, it works till a time. After that, it is like learning from 2023 and before. Being very honest on that. So, right. Thank you very much, Yasir. For the best experience, we must go for manual testing at every step. So, there is a very last question shortly. What kind of strategies do you apply when you managing? Do you apply to optimize ads when you managing large ads counts with multiple campaigns as well? Scaling, right? Oh, optimization. Sorry. Yes, optimization. So when it comes to optimization, let's take a sample for example, so that we're not just talking about numbers in here. Now suppose we are at a stage that I have a website and I have 10 separate products, right? And catalog ads are not working well in this specific domain. For example, right? Because I have different category of products, right? Now I have a budget of $1,000 every single day, for example, and my breakdown is that I have $50 each, or like you could say, $50 each for each product, right? Keep it 20 products, $50 every single day for each product, right? The goal is to get at least 3 ROS to be profitable, at least after cutting out at the moment, right? So in my case, I'm putting in 1,000, so the goal is to make at least 3,000 back, right? But to be profitable, I need to keep it above 5 ROS or at least 7 ROS, right? Now think of it in this way that your morning time fajr is starting. It is not like it's just morning, right? So all my campaigns are created. I'm ready to go, and every single campaign, we have 20 campaigns, right? And every single campaign has a different product, which is leading to only that specific product leads, right? So let's talk about one campaign, and the same process is followed in all of the campaigns. The campaign has just one ad set. Now, this is something I can prove by numbers, and I already have case studies on it, which is working effective. Again, this is a brand that we are scaling, we are optimizing. It is not a new brand. It has lots of data and everything. So the first question comes, it's a conversion ad, it's a sales ad, right? So what is the targeting? So 2 targetings would work for you, right? Use them, it will work. First targeting, that you do not need to put any targeting, you just need to put the country. All the cities that you know that get the maximum number of sales, no age, nothing, right? This is ad set 1. You either go this direction, right? And this is specifically for e-commerce, this is not for everything. Second option is that you specifically only put in engaged shoppers, nothing else. Okay. Trust me on that. Now these are the 2 options. Now I'm away from the ad set part. Now I'm on the creative level. On the creative level, each campaign I personally believe. Now there are multiple methods test over here because we have multiple campaigns. I'll tell you what I do. I put 3 creatives maximum at one time. Right. 3 creatives, 1 video. Second is an image.
Mm-hmm. Third is a video. It's the same video, but with a different creative. Mm-hmm. Sorry, correction. One video with a customized thumbnail. Okay. Second Okay. is an image. Third is the same video, but it Mm-hmm. has another image, which I Mm-hmm. could also use later on as a separate image ad. Right. You're getting the idea. Yes. So Started. the same process is repeated into, and the video that we have, right? You could say it is a UGC, Mm-hmm. but not necessarily a UGC with a person who's doing like a TikTok video, right? It could Mm. be just showing it should first address the problem that the product is solving, and then showing its benefits, and then Mm. a call to action, right? These three things, very easy. It could be 15-second ad. It could go up to 1 minute. I've tested all of these work, right? If the video is longer, then later on I'll tell you about more things. If the video is longer, it benefits us in the long run. But anyway, so this is repeated into all of the 20 products that we have, right? All of the products that we have whenever we are launching. So now let's get back to where we started. Now I have 20 campaigns on. It is Fajr time, 6 a.m., 7 a.m. Whenever people generally wake up in any region. You turn on all of the campaigns. You have put in $50 budget, for example. The campaign is turned on and it is running. Now, what is the first step where you monitor? Where is the first point where you've turned on the ad? Now you're gonna be like, I'm gonna check it after 3 hours. So it is around 10 p.m., 11 p.m., 11 a.m., 10 a.m. You're gonna check your campaigns now, and you're gonna see your campaigns. That out of those 20 campaigns, how many campaigns have already received conversions or sales, and how many of them have not received them, and how many have received at a normal level. For example, campaign 1 to 5, each of them has received 5 conversions. Each of them. Okay. Campaign 5 to 10, each of them have received 3 conversions, or 3 conversions, 4 conversions, right? Okay. Then 10 to 15, they have received 1 or 2 conversions. Mm-hmm. And 15 to 20, right? 15 to 20 have Right. received no conversions. So at 10 p.m., what is my first thing? What I'm gonna do? I'm gonna turn off the campaigns that have not given me a sale. So I turn off 5 campaigns here, and then I let all of these 15 campaigns run. Or even I could turn on the campaigns that have given me 1 or 2 sales, maybe, right? It is subjective, but in most probable cases, the 5 campaigns that did not give me result, I'm gonna turn them off, and the other 15 campaigns, I'm gonna let them run until for next 2 or 3 more hours maximum. Okay. So over here, now I'm talking about based on data, because when I'm optimizing campaigns, it means I have a lot of data. I have at least data of consistent sales, for consistent and inconsistent sales, both consistency also and inconsistency also, right? Mhm. Both of these things are required to optimize the campaigns properly at this advanced level. Hmm. Over here, what we do is that, for example, 1 p.m., I know that the orders from 2 p.m. till 4 p.m., I have received orders, but very less. Just getting 1 or 2. Okay. And the cost that I spent during those hours, it does not change, right? Mhm. Right. So according to where you are, where you're selling, whatever data you have, you turn for those specific 3 hours, maybe it's lunchtime or something, whatsoever, right? Hmm. You turn off all of the campaigns entirely, or just keep those specific best performance campaign on running, keep on running them, the ones that have performed best, right? So Okay. if I go back on what I said, if I do a recap, 6 in the morning, you start your ads. Till 10 Mhm. a.m., you see how many campaigns have not performed. You turn them off. Let the other campaigns run for an extra few hours. Now, suppose we are at 1 p.m., and I'm seeing that out of those 15 campaigns, 8 Hmm. of the campaigns are still giving me conversion. 3 of them, they did not receive any further conversion. So Right. there are 2 options. Either I'm going to turn off all of the campaigns at this point, or I'm just going to turn off the campaigns that they did not receive any further conversion. Okay. Now, consider this in a way that it's up to you to let those 8 running, keep on running, or just pause them. So what I did mostly, I paused all of the campaigns. I'm like, okay, I'm gonna run it. I'm gonna resume these campaigns Mhm. right before the peak hour starts. Peak hour Okay. is different in every. You do not need to start at the peak hour. You have to start it 1 hour before the peak hour, because once you pause the ad, right, the system stops, and when you turn it on, there's a big possibility that
Meta starts serving those ads to a different audience. Right. You getting my idea? It serves the audience to a different, serve the ads to a different audience. Now Hmm. it is, for example, 5 p.m. I'm like, okay. So Hmm. these are all of my 20 campaigns. Now here is the next tricky part, right? Very important. Hmm. So for every campaign, I knew that at 50, if I'm running ads for $50 every single day, this is something that you do when you do business Hmm. analytics, and you do everything over Excel or whatever your software is. You put in all the formulas and everything, and you know that you need to have a sale at a specific CPA. At which, if the sale is above that, then that means that product is not profitable for that. That means that even if I ship the product, or if I whatever I do, I'm not profitable, right? Yes, So don't want obviously. to mess my ROS. Hmm. So at that point, you decide, or you keep it as a benchmark, that any product that I'm selling, if the CPA is more than $20, for example, Hmm. then I'm not profitable, right? Right. So you turn on all of the campaigns, and you let all of the campaigns, including the ones that did not receive any conversion. Hmm. Now, let's just suppose all campaigns are on again. You started. You're checking back after 3 hours, like Hmm. this time, 8 p.m. After 3 hours, you're checking. So you see that the 5 campaigns that we like, campaign 15 to 20, we turned off. So I Hmm. noticed that two of those campaigns have given me one sale each at CPA of $20. Hmm. I'm like, okay, this, Right. right? So this means these products are giving me a sale. I was lucky enough to make my money back, maybe 10% more, but I Yes. don't want to risk it. And rest of Hmm. the campaigns you have crossed 20 CPA, no. So you're like, okay, if I'm gonna continue running them, they're Hmm. gonna mess my ROS for the day, total ROS. So Yes. you turn those campaigns off immediately, right? You put them. You're like, I'm not gonna put more than $20 on this campaign, Hmm. right? You pause Right. all these three campaigns, you assess rest of the campaign, that okay, I've recovered my money at least. I'm gonna turn them off now. Then you look at rest of the, for example, you look at rest of the 12 campaigns now instead of 8, like I mentioned earlier. Now we're looking at 12 campaigns. Yes. Out of those 12 campaigns, you could say, now I'm gonna talk in percentage, or let's Hmm. put it 10 campaigns, right? Just to make it easy. Now we have 10 campaigns. Out of Yes. those 10, four of my products have received around, and I'm talking from live numbers. I think I even have a recording of them from some time back. Hmm. So 20, each product has received at least 10 to 15 conversions. 8 Okay. products, right? Till Hmm. now, right? Okay. Right. Rest of the products, they have given us something back, but the other ones are there. Right. Good. Over one side, I'm getting 10 conversions. On the other, rest of the campaigns, I'm at least getting 3 to 8 conversions. Right. It is almost half of the best performing campaigns. You can consider that. Right. Hmm. So this Right. means now I need to select if I should continue running rest of the campaigns or not. So in most probable cases, I think half of my campaigns, 60% of my campaigns have started Hmm. giving me sales, more than 2 sales. Now that means that, let's just wait how much more we can make out of it. So we Hmm. wait. So now Right. it's up to you how, till what time to be assessed. It could be 10 p.m. It could be 11 p.m. It could be 2 p.m. It is different in every market. In Hmm. Pakistan, I'll tell you, in Pakistan, I've received order also at 2 a.m., at 4 a.m., at Hmm. 8 a.m. So I did not turn off my campaigns. I was like, okay, there's a risk that we will waste some budget, but let it run. Hmm. And That is it gave us, it gave, yeah, the ROS was always at risk. The client was always crying, normal thing. But, but that was in Pakistan. I did not do that anyway. true. Everything I did in Pakistan, a lot of things backfired in UAE, and the things that worked in UAE, they backfired in US and UK market. So you're getting the idea. So every market is different. Right. So Right. coming back to the point again, day one is finished. Hmm. Time for day two. So we repeat the same process in day two. The only difference is, the funny thing that you'll see is that the Hmm. product that has the highest sales, it has normal sales. The product that had no sales started to get 3 or 5 sales, and the product that has, that was in the middle, it automatically Hmm. became the bad campaign for that day. Hmm. So, So so this is should. a circle that is rinse and repeat. Hmm. Yeah, So you were going to say. So So one Go last ahead. thing, sorry, before you guys, one last thing. So over here, how do I win with the ROS? I win with the ROS because I had a $1,000 budget every single week, and I saved around $400
at Mhm. least by not choosing to advertise on certain campaigns. So this means my ROS, because my budget was spent less, my ROS increased, and at the same time, the best performing campaigns would turn on. So every single, just like a sugar cane, you're putting in into the guy is putting it into a machine and squeezing it 3 times, you're getting max ROS out of it. So my personally for myself, if we were putting 1,000 dirham in a day, we are Mhm. making 8 and 9 times back, and there were sales that were coming from WhatsApp and Messenger as well. That I, Mhm. they were not. I was never given credit for them, but of course I was driving traffic. Yeah, of course. So this is the process that I rinse and repeat, but it was possible when the ad account was at a good optimization level. It was not Mm. with a new ad account. It was not with an ad account that was 3 months old, right? The strategy for 3 months old ad account or a new ad account is different. Hmm. So I think just to wrap up this question, Okay. this is the answer. Yes, thank you very much, Yasir bhai. Just got very, very fruitful answer and points and knowledge as well. Thanks for your answer, and there are a lot more people waiting for their questions as well. Thank you. Of Yeah, course. absolutely. And thank you so much for answering in such a detail, like by going over the optimization strategy that you are actually following yourself. So everyone, thank you. Everyone, just gives us a thumbs up if you are having a good time and finding a value out of this. I would really, really appreciate that because, and Ahmed by taking quality time out of his day and evening coming over here and trying to help you out, and the goal is to help you, right? So everyone's time is of precious, and that we are still dedicating this time for you. So anyone, if you have any questions, you can just raise your hands and I'll be bringing you up. The next, before I take on the next question, Yasir bhai, maybe you have a little bit of distortion in your mic side. Maybe the fan is a little high or something, just to highlight this. And Ali Hasnan, you can unmute your mic and ask your question. In the meantime, if anyone else has any question, they can raise their hand. हाँ जी जी मैं बोल रहा हूँ उर्दू में बात I think your network is slow. Can you speak? मैंने उर्दू में बात करनी है क्योंकि मैंने जो लेक्चर लिए हैं ना यूडेमी पर यासिर भाई के और यूट्यूब पर वो सारे उर्दू में है ना तो मुझे Sure, sure. उर्दू में अभी मैं इंग्लिश भी सीखनी है ना तो मैं उर्दू में बात करना चाहता हूँ All right, you can speak in Urdu for sure. No worries. यासिर भाई से पूछना है ना यासिर भाई के मैंने अक्सर ना लोगों को ना वो डैशबोर्ड में ना कंपेन काफी सारी ना लोगों को शो करते हुए देखा है जबकि ना हमें एज ए फ्रीलांसर या अपने लिए भी काम करते हुए ना अगर किसका एक एड अकाउंट लेते हैं तो हम एक कंपेन रन करेंगे तो वो काफी सारी कंपेन वहां पे कैसे लोग शो कर रहे होते हैं आपके शायद लेक्चर में भी मैंने देखा है कि मैंने पता नहीं 6 लाख डॉलर की सेल की है तो मैं वो सोच रहा था कि एक कंपेन में एक एड अकाउंट में एक कंपेन बनानी चाहिए या बनती है या दो तो आप इतनी सारी कैसे बना रहे थे ये कैसे हो सकता है हो गया अली। तो अली यार इसका सिंपल सा आंसर ये है यार, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है यार। इट इज़ जस्ट अबाउट एक्सपीरियंस। फॉर एग्जाम्पल एक चीज़ में आपने कितना टाइम लगाया है। अच्छा अली माइक म्यूट कर लीजिए अपना अभी तक। तो इसकी मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि जो आपने मेरे एड अकाउंट देखे हैं, एक एड अकाउंट वो होता है जो ब्रांड न्यू होता है। मैं आपको इसकी एग्जाम्पल देता हूँ। अगर मैं ब्रांड न्यू एड अकाउंट आपको दिखाऊंगा, फॉर एग्जाम्पल एक ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म है, उसके लिए मैंने वीडियो उनके साथ सेशन किया था लास्ट आई थिंक 4-5 मंथ्स पहले। तो उसमें जो मेरा एड अकाउंट था ना वो बिल्कुल ब्लैंक था, उसमें कुछ भी नहीं था, बिल्कुल खाली था। तो जब मैंने वो वीडियो रिकॉर्डिंग करी, चीज़ें करी, लाइव सेशन दिया, तो मैंने ये चीज़ बाद में जब वो वीडियो अपलोड हुई तो मैंने लोगों की बहुत अच्छी फीडबैक भी सुनी उसमें, और ये फीडबैक भी सुनी कि लोग कह रहे थे यार इसका तो अकाउंट खाली है, ये है वो है। लोगों का एक भरोसा नहीं बनता कि यार वो देखें और कहें कि यार ये बंदे से सीखने का कुछ सेंस बन रहा है ना। बात आ जाती है रिवर्स के यार आपको नंबर्स दिख क्यों रहा है? वो नंबर्स आपको इसलिए दिख रहे हैं ताकि अब पहली बात तो ये है कि एड अकाउंट के अंदर आप मल्टीपल चीज़ें प्रमोट कर रहे हैं तो आप मल्टीपल कैंपेन्स बनाते हैं। ठीक है, जैसे आप अगर अपने घर में जाएं, किचन में जाएं, तो किचन में आपको कुकिंग की, आपकी अम्मी की, आपकी सिस्टर की, वाइफ की बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो आपकी और मेरे पल्ले नहीं पड़ेगी। हमें तो सिर्फ ये दिखता है कि यार ये इसमें खाना बन रहा है, हमने जल्दी से प्लेट में निकालना है खाना, लेकिन वो खाना बनाने के लिए ना आपको 10 टूल्स चाहिए होते हैं जो वहाँ रखे हुए होते हैं।
इसी तरीके से हम लोग जब एडवर्टाइजिंग कर रहे होते हैं तो वो सिर्फ एक चीज को प्रमोट नहीं कर रहे होते, हम लोग बहुत सारी चीजों को मल्टीपल तरीके से प्रमोट कर रहे होते हैं। तो जो आपको अकाउंट दिख रहे होते हैं ना, वो आपको एक हफ्ते पुराने नहीं दिख रहे होते, वो एक एक साल पुराने, दो दो साल पुराने अकाउंट होते हैं, समझ रहे? तो वो बहुत सारी चीजें होती है जिनको हम एक साथ समेट कर कॉलम्स बना के आपको शो करते हैं कि यार ये नंबर्स हैं, ताकि जो बात बोल रहे हो नंबर्स के साथ उनका सेंस बन रहा हो, समझ रहे हैं? सेंस बन रहा हो बात का, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, इट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन। आपने अपने एड्स को ऑर्गेनाइज किया, क्या ये पैसे स्पेंड हुए, ये कैंपेन थी, इतने का हमें ऑर्डर पड़ा और इतने पैसे हमारे बने। अब जब दिख गया एट द एंड ऑफ द डे, दिख गया कि यार इस काम से पैसे बन रहे हैं और ये इतने पैसे हैं, इसके बाद सामने वाला जो बात बोलता है उस चीज का सेंस बनता है। तो आपके सवाल का जवाब, यार इतनी सारी कैंपेन्स मैं खुद भी ट्राई कर रहा हूँ, एक में नहीं, अभी आपकी लर्निंग बहुत सारी बाकी है। क्यों? क्योंकि अभी आपने अपने हाथ से उतनी चीजों को स्पेंड नहीं किया या इतनी चीजों को प्रमोट नहीं किया कि आप कह सके कि यार हाँ यार आज मेरी भी 10 कैंपेन्स है। भले आप फ्रीलांसर हो, आज आप फ्रीलांसर हो और आपके पास एक क्लाइंट है, 2 क्लाइंट है, आप उनका एड रन कर रहे हैं और 1-2 कैंपेन में उनका काम पूरा हो रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है काम पूरा हो, 100 कैंपेन इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है एक कैंपेन चली उसी से धन सेल्स निकल रही है। ठीक है, और उस कैंपेन के अंदर जब आप घुसे तो फिर पता चला कि यार इसमें तो 4 एड सेट्स हैं और हर एड सेट में 4 से 5 अलग अलग इमेज या वीडियोज है। तो वो दिख रही है क्या, लेकिन वो पीछे जाकर 25 है और वो 25 वर्क कर रहे हैं। तो फिर आपको सेपरेटली 50 कैंपेन बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, आप बोलें कि यार ये एक कैंपेन है, ये एक प्रोडक्ट की है, अब मैं दूसरे प्रोडक्ट की कर रहा हूँ, या फिर ये स्पेसिफिक कैंपेन मैं सिर्फ इंगेजमेंट के लिए या फॉलोअर्स लेने के लिए चला रहा हूँ, और ये कैंपेन जो है मैं चाह रहा हूँ सिर्फ वेबसाइट सेल्स के लिए चले, और ये कैंपेन जो है इससे बस लोग मेरा इवेंट या पेज या कोई चीज ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो तब दिखता ज्यादा डेटा है। तो इट इज जस्ट अबाउट टाइम। आपका टाइम जैसे बढ़ता जाएगा, 1 साल 2 साल 3 साल, ठीक है, उसी तरह आपकी एक्सपीरियंस और चीजें बढ़ती जाएंगी। सिर्फ सवाल ये है कि डेली आप कंसिस्टेंटली चीजों को करते रहें और एक्सपेरिमेंट करते रहें और फेल होने से ना डरें, क्योंकि जब तक उन कैंपेन में फेलियर नहीं आएगा ना, तो आपको फिर सक्सेसफुल कैंपेन्स बनानी नहीं आएगी जो सिंगल डबल ट्रिपल कैंपेन की हो। ठीक है जी। और ये भी पूछना था ना कि हमें सीखने के बाद जरूरी है कि फ्रीलांसिंग ही करनी चाहिए, और अगर फ्रीलांसिंग ही कर रहे हैं इन मार्केटों के अंदर, फाइवर और अपवर के अंदर या कोई और भी, तो इससे आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए, या कहाँ अगला स्टेप हमारा क्या होगा इन फ्यूचर के लिए? गुड क्वेश्चन। वेरी गुड क्वेश्चन यार, ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, क्योंकि हम सब स्टार्ट करते हैं और हमें सिखाने वाला बंदा जो डायरेक्शन देता है हम उसको फॉलो करते हैं। पाकिस्तान में मेजर आवाम है वो बोलती है कि यार जिसको जो आता है ना वो बोलता है वही करो। जिसको ई कॉमर्स आता है ना वो बोलेगा ई कॉमर्स करो, जो ई कॉमर्स में स्पेसिफिकली ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म के साथ कर रहा है वो बोलेगा ड्रॉप शिपिंग करो, शॉपिफाई करो। ठीक है, हमारे यहाँ तो टर्म है शॉपिफाई, ठीक है, सर पे चढ़ा के रखा हुआ सिंपल से वेबसाइट क्रिएटिंग सॉफ्टवेयर को। जो फ्रीलांसिंग कर रहा है वो प्लेटफॉर्म्स पे होगा, फाइवर अपवर्क पे, क्योंकि उसको फाइवर अपवर्क पे ऑर्डर आते हैं, उसकी गिग्स पुरानी हो चुकी है, उसको इत्तेफाक हो गया है फाइवर पे किस तरह आपकी गिग शो हो, चीजें जो भी उसकी प्लेटफॉर्म की ट्रिक्स है, राइट, उसको वो आता है, वो आपको वो रेकमेंड करेगा। आपने ये चीज डिसाइड करनी है कि यार कौन सी चीज लर्न करके आपने किस डायरेक्शन में जाना है। ठीक है, मैं पर्सनली मेरा फाइवर का और अपवर्क का अकाउंट जो है 2015 का था जब मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन मेरी आज तक एक चाराने की वर्किंग नहीं हुई, क्योंकि मेरा दिल नहीं करता था कि मैं बैठ के गिग्स बनाऊं, ये करूं, मुझे बहुत ऑफ लगता था। तो मैंने ऑफलाइन वर्किंग स्टार्ट करी और मैंने अपने जॉब के अंदर ये वर्किंग स्टार्ट करी, और फिर मुझे जॉब के साथ साथ क्लाइंट्स भी मिले, और उसके साथ साथ जो है कुछ मैं अपनी भी फिर मैंने प्रमोशन शुरू करी, चीजें करी। तो ये सब एक मिक्स्ड एंड मैच है। तो आपने कोई सी भी एक डायरेक्शन पकड़नी है जो आपको लगे कि यार ओके ये काम इस तरह हो सकता है, और आपने उस डायरेक्शन में निकल के उस चीज के अंदर टाइम और पैसा स्पेंड किया। अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं और आप क्लाइंट के बेस पे एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं, उस चीज को सीखकर जो ऑब्वियसली आपको दिख गई है तो भी बुरा बात नहीं है, लेकिन आपके 5 क्लाइंट्स आएंगे तो उनमें से शायद 1 सक्सेसफुल हो, 4 फेल हो जाए, लेकिन उन 4 की फेलियर से आपको ने लर्न करना है कि यार मैंने कौन सी चीज सही करी और कौन सी चीज गलत करी। तो 5वां क्लाइंट, 6वां क्लाइंट, 7वां क्लाइंट, 8वां क्लाइंट, 10वां क्लाइंट, इन 5 क्लाइंट्स के अंदर आपका इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा कि आप कह सकते हो कि यार हाँ ये काम मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। अगर नहीं कर सकते तो आप फिर इसी काम के अंदर आप सिर्फ डोमेन चेंज कर ले। आप कह रहे थे कि यार ठीक है मैं क्लाइंट से काम कर रहा था, उन सबका भी ई कॉमर्स था, अब मैं इनके लिए ई कॉमर्स नहीं कर रहा, मैं अपने लिए ई कॉमर्स कर रहा हूँ। भाई मुझे काम की वीडियो मिल गई किसी की, अब मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ। तो एडवर्टाइजिंग की काफी चीजें आपको आती थी, कुछ चीजें आपने उस काम के लिहाज से स्पेसिफिकली सीख ली और अप्लाई कर लिया। अब ये वही बात है कि यार एक चीज के ऊपर आपने कितना टाइम लगा लिया, एक डोमेन पे कितना टाइम लगा लिया, उस डोमेन में जितना ज्यादा टाइम लगाते जाएंगे उतना ज्यादा एक्सपीरियंस होता जाएगा,
तो जितना आपका एक्सपीरियंस होता जाएगा विद टाइम, आप लगे रहोगे तो विद टाइम आप भी ग्रो कर लोगे। तो आज के दौर में आपको बहुत सारे लोग आपको टिकटॉक के ऊपर क्या नाम है लिंक्डइन के ऊपर सब आपको दिखेगा, सब चीते हैं, हम अरबोपति करोड़पति हैं, हमारे करोड़ों की सेल है। उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो मेरे डायरेक्ट स्टूडेंट्स थे और बिल्कुल जीरो से लर्न करके आए थे, समझ रहे हैं। लेकिन डिफरेंस क्या आया, उन्होंने मुझसे लर्न करने के बाद बहुत सारी चीजें अपनी बिल्ड करी और उसके बाद भी वो आगे लर्न करते गए और ग्रो करते गए। आपने भी एग्जैक्ट चीज ये करनी है, समझ रहे हैं। तो डोंट वरी, जस्ट कीप ऑन डूइंग व्हाट यू डूइंग, तो आपका रास्ता इंशाल्लाह आगे बन जाएगा। सिर्फ इम्प्रूविंग करते रहें और किसी भी चीज से जो है ना आप बुली होकर पीछे मत रहिए। जी जी, वो मैं सीखता तो रहता हूँ, और मैंने वो ये भी सीखा है ना कि पर्सनल ग्रोथ थोड़ी देर के लिए या काफी टाइम के लिए होनी चाहिए, और बाकी टाइम अपने काम भी करते रहो। अच्छा, मैंने अगला सवाल ये भी पूछना है कि अगर मैं इस टाइम ना मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, तो अपवर के ऊपर क्यों फाइवर से मैं मतलब कट कर गया हूँ, तो वहां पे मुझे एक एरर समझ नहीं आ रही कि क्लाइंट का एड अकाउंट हमें लेना चाहिए। कभी वो कहते हैं आप हमारे एड अकाउंट में मतलब के अंदर एंटर कर लो। ये दो टाइप होती हैं, मुझे इसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मतलब परेशान सा रहता हूँ। जी आपके सवाल बड़ा वैलिड है। इसका जवाब ये है, आपको लर्निंग करने की जरूरत है। लर्निंग आप तभी कर सकते हैं जब आप किसी की ट्रेनिंग फॉलो करें। यूट्यूब पे आपको लाखों वीडियोस मिल जाएंगी, आपको सब आ जाएगा, लेकिन जब आप काम करने बैठेंगे ना तो आपके सवाल का जवाब देने वाला कोई नहीं होगा। जो मैं अपनी मेंटरशिप ऑफर कर रहा होता हूँ ना, उसमें यही चीज़ है। थोड़ी एक्सपेंसिव है, कुछ टाइम बाद शायद और एक्सपेंसिव हो जाए, क्योंकि उसमें मेरे बहुत सारे साल, मतलब 10 साल 8-9 साल का एक्सपीरियंस में ऐड है, इंक्लूडिंग एवरी सिंगल थिंग जो आपको जीरो से नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए। नॉलेज विद एक्सपीरियंस विद प्रैक्टिस। आपके पास से जो मिसिंग है, आपको चीज़ें पता है, ठीक है, आपको चीज़ें सारी पता है, लेकिन आप वो स्पेसिफिक मिक्स कर रहे हैं जो काम करने के लिए इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं। एड अकाउंट का एक्सेस आपने क्लाइंट का नॉर्मली लेना होता है उनके बिजनेस मैनेजर के थ्रू। आपने अपने एड अकाउंट पर कभी भी काम नहीं करना। क्लाइंट भी होशियार होते हैं, वो आपसे काम करवा के जो है आप ही का कार्ड लगवा देते हैं और फिर आपके पैसे कट जाते हैं और क्लाइंट भाग जाता है, ठीक है। तो गोरे भी फ्रॉडी होते हैं और देसी भी फ्रॉडी होते हैं। आपको क्लाइंट के एड अकाउंट का एक्सेस लेना है। बिजनेस मैनेजर सर्च मारे, मैं आपको नॉर्मल बता रहा हूँ, नेसेसरी नहीं है आप मेरी साइट पे जाके सारी चीजें स्टडी करें। बिजनेस मैनेजर, फिर मेटा बिजनेस मैनेजर, और इसके ऊपर आप एक तो मैं नाम बंदों के भूल जाता हूँ, फिलहीप की वीडियो देख लें, आपको उसमें भी समझ आ जाएगा। और इसके अलावा आई थिंक मेरी भी एक आध वीडियोज होंगी, वो मैं देखता हूँ, अगर मेरे पास अभी भी अपलोडेड है यूट्यूब पे तो ठीक है, अदरवाइज मैं उनको आगे जाके अपलोड कर दूंगा तो आपको दिख जाएगा। बट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इन्वेस्ट इन लर्निंग, आपको वो मेरी मेंटरशिप में बहुत अच्छी मिल जाएगी। इट्स नॉट जस्ट ई-कॉमर्स, अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स दैट वुड मेक योर इनकम 10x। वो ठीक है, आपके मैंने यूडेमी वाले कोर्स भी इनरोल कर रखे हैं ना, जिन्हें भी मैंने देखा नहीं है। मतलब कि कल की डेट में ना मैं पॉलिसी देख रहा था कि अक्सर ना ऐड अकाउंट बंद हो जाते हैं, तो वो मुझे पॉलिसीज वाला उनका जो मेटा के मतलब कि जो पॉलिसीज होती है ना, ही ना हो। ये तो मुझे पता है, गलती करने से ही सीखूंगा, लेकिन वैसे लर्निंग कर रहा हूँ मैं पॉलिसीज। Thank you, Ali bhai, for such a great questions. Or let's give comment it in the post section. So I'm gonna move on to the listening side. Thank you so much, Ahmed bhai, for answering all his questions in details and sharing your wisdom. I'm gonna go towards Ahmed Rashid. If you can unmute your mic and ask the question you might have. Ahmed? He might not be here. Let's say he might be facing some issue. Or let's move towards Rabia Ashraf. You can unmute your mic and ask the question to Yasir bhai. Yes. I think people are having issue over here. But guys, if you are if our audio is coming loud and clear, just gives us a thumbs up so we know there is no issue on our end. Thank you so much. And Ahmed, I'm giving you the mic.
So, That's true. Oh, Ahmed, Rashid, can you unmute your mic? We are facing, I think, some sort of Yeah, sure. My voice is clear. yes. Okay. Thank you. Thank you so much for this opportunity. My question is that from Yasir Ahmed, sir. When we have that best creative that's perform too much best and they have that 4 ROS, and when we can more and more scaling, but after that I see that the scaling and the sale will drop. And for example, on the last month they have that very good ROS and we can just getting a very good sales and ROS as well. But from the next week or next week, all through the budget is same, but the sales were drops. My first question is that how we can scale it consistently, because it's our best performance, and for finding the best performance it's very hard. The second question, how we make the iteration on the best performance. Thank you. Assalamualaikum, Ahad bhai. ठीक है, you explained the question very well. There are certain things that, of course, we all learn with experience. Me being having more experience, I could give you an example. Some things that's gonna help you out. First thing, your performance would not be the same. Even in a single week, the performance would not be the same. I'll tell you why. Day one, you're running the ads. Supposingly, you're running a Advantage Plus campaign, right? Because it's giving you good cost. Day two, you will not get the same result. Day three, you will not get the same result. Day four, you will start getting results again. I'll tell you why. Because previously, what used to happen that when you used to run ads, the result was consistent. Now, result is inconsistent. So you need to figure out a way to make it balanced. So in that way, there are factors that matter a lot. For example, when we are doing e-commerce, the funnel is very simple. You either run ads directly for conversions, website sales, or you either put it in two factors. One factor, you're running conversions ad but for content views. Second factor, you're running conversion campaign for sales. So when you're running the campaign with two funnel objectives, so the first funnel part, top of the funnel, whatever you call it, right? Content views, it will cost you less compared to compared to the campaign which is giving you direct sales. But in that way, you are feeding your ad account consistently with clicks and data. Then your ad account is learning from the audience from that data, and then can be giving you sales. If you just have a campaign that is a single campaign and you're running sales for it, right? Sales campaign for it. Right? At that point, day one, it tested a campaign and Facebook gave it sales. Automatically. Checkout, right? On day two, you see that everything is the same, but your CTR has gone down and your CPM has gone up. Or maybe the CPM is same, but the CTR has gone down. That means right now the audience that Facebook is serving, your ad that Facebook is showing to the audience its system is testing the audience, but that audience is not responding well to your product. I'm saying, so by studying the numbers, you need to make changes to your campaign. You can either put insert a new creative into that campaign, right? Or you can either pause your campaign entirely and create a new one. So if you create a new campaign, like you just duplicate it.
So on that campaign, what could be one problem? You might be doing it in the middle of the day. You might not get, you might not reach good audience at that time. But for example, you pause your campaign, you duplicate the campaign, and you just post it. Same thing, everything is same. You just duplicate and post it. Automatically, Facebook will serve that audience. Automatically Facebook will serve that ad to a new audience. There's a big possibility the CTR is even higher than earlier. You would start getting sales. So you would have to manually look into these things. So the easiest way to do is just to add a new creative to that existing campaign and let them run. Let two ads run at the same time, like two creatives run at the same time. Turn off everything else, easier. Or you can just pause the campaign, or just duplicate the campaign and let it run again. So it is all just about experiment. So whatever you're doing, just add this to your experiments. You would see some results. This is the simplest advice that I can give you. Right. So there was second question, Ahmed. I think I'm not sure if I'm forgetting. Ahmed, you asked the second Yeah. thing as well. Thank you so much for answering my first question, and thank you so much. And my second question, for example, we get the best-selling creative, and we know that's their hook and all that stuff. How we can make the iteration, and how many type of iteration we can make that? Thank you. You mean to say iterations, right? The changes, the small changes. Yeah, changes. Yeah. Okay. Ahmed, I don't entirely understand your question. We can say it in Urdu. There's no problem. Yeah, maybe Asking about variations of the ad, or you're asking about the variations of the ad, or you're asking about the different Right, variation of the ads. Perfect. So in terms of variation of the ad, in Meta, I'm talking about Meta, right? There's a different way to do it on TikTok or Google. In Meta, you know that your ad copy is good, right? Using the right kind of call to action button. What can Facebook consider what as a new creative is that, for example, I have a video of me sitting and talking about something. Example, I have a custom thumbnail on it in which I'm sitting on a chair. It's a custom thumbnail, but I'm sitting on a chair. I duplicate this video, I duplicate this creative, and I put another thumbnail. Same video, but another thumbnail onto it. It becomes a new creative entirely. Or whatever the hook that you have on the video, just change it. Even if you have any text written on your thumbnail, you can just change the text and Facebook will consider it as a new creative. Even if you make these adjustments, Facebook will consider it as a new creative. So by this method, you can test 3 variations of an ad at a single time. So what I did was, I have a lot of, when I'm not running ads for 2 years for my own personal courses and stuff, right? It's all working on autopilot. So every year or after every 6 months, I used to shoot an ad, and the ad used to obviously talk about the same thing, but the place and whatever I was offering was a bit different. But the first version that I did was that I had a 1-minute intro. I used that intro, but the only difference that I made was the headline on top and bottom, the text that you put in. And first I wrote complete Facebook advertising and Instagram mastery, or e-commerce mastery. Instagram and e-commerce mastery. 2 words on top, rest of the words at bottom. Right? So this was one variation. Now the second variation had different text on top and bottom. Right? And these were 4, I think I still have them in my laptop somewhere. So these were 4 or 5 variations of that same ad. Right? I'm speaking the same thing. When I ran this ad, I noticed that on a specific, the first one that I mentioned, Facebook Ads Mastery, Instagram and e-commerce, whatsoever, it had the best CPR at the lowest CPM. I was like, okay, this is the one that is gonna work. Then I took that video and then I tested different thumbnails on it. Same video, different thumbnail. The only difference was in one, my hand is in front. In the second one, I'm sitting back. In the third one, just like you're sitting and talking, we all have different ones. So then I put that same video with 4 different creatives and I let it run. Then I realized 2 of them were working good. So this is how I tested for a good ad. This is exactly what you need to do. Just keep what I just said, just keep that in mind. Experiment with creatives. You will automatically find something that will give you some amazing end result that you're like, okay, this is the best one. Then you're going to continue testing for second, third and fourth. Getting what I mean?
Yeah, I'm getting. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, and thank you for the great questions, Ahmed, and thank you so much, Yasir Bhai, for answering it in details and giving the context on how to approach the iteration process. So even very small changes can have a huge impact. In my personal experiences, I do always share this story, like even just changing one emoji in the ad copy can give you like 25% less CPA and Correct. 34 Correct. 6% more conversions. So this is on my own, based on my own personal experiences. So Very accurate. yeah. So thank you so much. By the way, I think there was one more person, and if from the audience, this is my question to you: if you are having or finding any good value, just gives us a thumbs up or heart emoji, so we know what we are doing here is trying to help all of you and others, just to make sure you, whatever issues you are facing, it you are going to resolve with the insights from the experts like Yasir. And if any one of you have any questions, just raise your hand, I'll be bringing you up. And one more thing, if you would like to speak in Urdu, you can start speaking in Urdu without us asking, right? So because most of the audience can understand, so it doesn't matter at all. If you want to speak in Urdu, we are okay with that as well. So I'm bringing Rabia and Shafin. Rabia. Hello. First of all, thank you so much for giving me an option to. Mm-hmm. Sure. Okay. I have a question to Yasir sir. How can we create the perfect buyer persona? Is there any tool that can provide data for building a buyer persona? And my second question is that if I am going to do A/B testing, what budget should I allocate for that campaign? What would you recommend? Okay, before I answer your question, I want to ask, what are you promoting or selling? Basically it's a product base. I'm selling product. Which niche? You have to be very uh, specific so that I can give you specific answers. उर्दू में बता दें, कोई टेंशन नहीं है. जी राबिया, उर्दू में बता दें कि कौन सा प्रोडक्ट है, किस बिजनेस नीश में है. इज इट इन होम एंड फर्नीचर? beauty it is या beauty. Beauty. Okay. ओके. Okay. No worries. No worries. अच्छा, पहली बात ये आ गई, टेंशन नहीं ले, पहले तो आप रिलैक्स हो जाए यार. लर्निंग के अंदर कभी कभार हमें खुद भी समझ नहीं आ रहा था क्वेश्चन क्या पूछे, तो आपने कभी भी क्वेश्चन पूछने में घबराना नहीं है. बस तसल्ली से क्वेश्चन पूछे. सही हो गलत तो आपको सिखाने वाला बंदा हमेशा सही बात बताएगा. तो मेरी हमेशा कोशिश ये होती है कि सही डायरेक्शन में लेके जाऊं. एंड मल्टीपल ऑफ द फीमेल्स दैट आर हेयर इनसाइड दिस, अभी इसके अंदर और इससे हटके भी, सब थोड़ी हद हिचकिचाती हैं, लेकिन आपने वो हिचकिचाहट हटा के क्वेश्चन करने और अफेक्टिवली करने, ताकि आपको हमेशा अच्छा आंसर मिले. सब आंसर अच्छा नहीं देंगे, सब आप, बहुत सारे लोग आपको गोल गोल करके हाँ करके निकाल देंगे, आपको आंसर नहीं मिलेगा. तो आपने डिसहार्ट नहीं होना. कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन लुकिंग. नाउ सवाल आ जाता है कि यार व्हाट एनी टूल फॉर बायर पर्सोना. तो पहले बात ये करते हैं बायर, लेट्स, जो इजीएस्ट थिंग इसके अंदर कि यार हमारा बायर कौन है, हमने ये आइडेंटिफाई करना है. इसके लिए आइडेंटिफाई करना बड़ा जरूरी है कि हम बेच क्या रहे हैं. ठीक है, अब इसके ऊपर दो किस्म की चीजें आती हैं, हमेशा याद रखिएगा. एक होती है थोड़ी ब्रॉड अप्रोच और एक होती है स्पेसिफिक नीश बेस्ड अप्रोच. मेटा के अंदर दोनों चीजें वर्क करती हैं और दोनों चीजें अफेक्टिवली वर्क करती हैं, बट वो हर चीज कितनी अफेक्टिव है ये एड अकाउंट टू एड अकाउंट वेरी करता है. ठीक है, से हर एड अकाउंट पे सेम चीज वर्क नहीं करती. ये थोड़ा सा मेटा का एक हमेशा का प्रॉब्लम है. तो बात आ जाती है कि यार आई एम सेलिंग ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड आई डोंट नो हाउ टू सेल इट. तो पहली चीज ये आती है कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स बाय कौन करेगा और उसमें है क्या क्या. ब्यूटी प्रोडक्ट्स बाय करेंगी खवातीन, राइट. दूसरी चीज ये आ जाती है कि यार मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं, मैं क्या बायर पर्सोना बनाऊं कि मेरा ऐड इन लोगों को दिखे. तो आप दुनिया का कोई सा भी टूल उठा लें और उस पर बैठ के पूरा सोच लें कि यार ये बायर पर्सोना और इनको ऐड दिखाना है. जब आप ऐड रन करेंगी उन लोगों को ऐड नहीं दिख रहा होगा, ऐड किसी और को दिख रहा होगा. तो जब आपने सारी मेहनत बायर पर्सोना पे की होगी वो वेस्ट हो जाएगी. तो इंस्टेड व्हाट यू शुड डू, यू शुड गो टू दी एड्स मैनेजर्स टारगेटिंग एंड वहां पे आप जाके सिर्फ कीवर्ड लिख दें. ठीक है, कैंपेन क्रिएट करते वक्त
आप कीवर्ड लिख दें ब्यूटी, लिख दें किसी भी ब्यूटी प्रोडक्ट का नाम या जिस भी आप नीश में काम करें प्रोडक्ट का नाम लें, कुछ भी लिखें, आपको उससे रिलेटेड कीवर्ड्स मिल जाएंगे। ठीक है, जब आप उससे रिलेटेड कीवर्ड्स लेंगी और उनको अपनी टारगेटिंग में डाल देंगी तो आपका एड मोस्ट प्रोबेबली उन्हीं ऑडियंस को रीच करेगा। पहली चीज होगा ये। ठीक है, तो जो आपने अपने माइंड में पर्सोना बनाया था कि यार ये मेरा कस्टमर है, ऐड के अंदर वो लोग इस तरीके से दिखते हैं। लेकिन जो ब्रॉड अप्रोच है, ब्रॉड अप्रोच का मतलब ये है कि यार एकदम खुली आपने ऑफर रखी कि कोई भी ले ले, लेकिन आपने एक चीज उसके अंदर लिमिट कर दिया, आपने बाई जेंडर उसको लिमिट कर दिया। यार फीमेल्स को ऐड दिखे और इस एज के बिटवीन को दिखे। नाउ इसमें मैं आपको एक प्लस पॉइंट बताता हूँ। जब आप प्लेटफॉर्म को फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों सेलेक्ट करने की जगह जब आप खाली इंस्टाग्राम पे ले जाएंगी और फिर यही काम करेंगी तो ऑटोमेटिकली आपके प्रोडक्ट रीच करेगा उन लोगों को जो उसके मोस्ट प्रोबेबल बायर है, लेडीज। एंड लेडीज कौन सी? जो हु आर मोर लाइकली इंटरेक्टिंग विद दिस काइंड ऑफ कंटेंट। ठीक है, जो आपने पर्सोना बनाना है तो या तो आपने एक्सेल पे बनाना है कि यार मैं इन लोगों को टारगेट करना चाह रही हूँ, तो इन लोगों को टारगेट करने के लिए मैं किस तरीके के कीवर्ड्स भी यूज कर सकती हूँ। या फिर आपने ओनली बाय जेंडर एंड एज करना है कि यार फीमेल हो और सपोज कर लेते हैं कोई बाय कर रहा है तो उसके पास पैसे होंगे, वो कोई यूनिवर्सिटी का शायद स्टूडेंट ना हो, मोस्ट प्रॉब्लली उसके पास पैसे होंगे, तो फिर मैं हमेशा उसको रखूंगा 18 साल या 20 साल से लेकर 40 साल तक। तो 20 साल से 40 साल के लोग जो इंस्टाग्राम पर हैं या 45 साल के लोग जो इंस्टाग्राम पर हैं फीमेल्स, देयर इज अ बिग चांस कि वो सारी की सारी आपकी कस्टमर है। अब ये आपकी किस्मत है कि जब आपने एड रन किया, आपका क्रिएटिव भी अच्छा था, चीज़ें भी अच्छी थी, जो भी खातून ने ऐड देखा वो आपने आपके ऐड पे क्लिक किया और आपका प्रोडक्ट बाय कर दिया। समझ रही हैं? तो ये आपके क्वेश्चन का जवाब है बायर पर्सोना होने का। फिर डायरेक्टली कोई टूल नहीं है, आपको ये मैनुअली करना होगा और ये सारी चीज़ें बाय एक्सपेरिमेंट आपको पता चल जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि यार ये फिक्स है यही करोगे तो ही होगा। इट इज़ अबाउट एक्सपेरिमेंटिंग। सारी चीज़ें परफेक्ट हो सकती हैं, प्रोडक्ट बेकार हो सकता है तो फिर आपकी सारी प्लानिंग वेस्ट हो गई, क्योंकि अगर प्रोडक्ट बेकार था और आपका प्रोडक्ट बेकार है और आपने कोई टारगेटिंग भी नहीं डाली, आपका प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली बिकना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसकी इमेज और वीडियो अच्छी थी और शायद ये नई चीज़ है। समझ रही हैं? तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो आपकी बायर पर्सोना और सेल्स के अंदर मैटर करेंगे। ठीक है, आपका जो दूसरा सवाल था मुझे कोई एक बार रिपीट कर देगा, एक और सवाल आपने पूछा था। I think she has gone. Maybe her network is not working. लेकिन I would commend especially the females. Everyone, I would ask you to gives a huge round of applause or the clappings for the females to taking the courage and coming onto the stage and asking such a good questions, because most of us, even I used to be the one, it takes a little bit of, not just about a little bit, but actually quite a lot of courage to come on the stage and speak. So hats off to everyone who is coming over here, and especially the females. And Shafeen, you can unmute your mic and ask your question. In the meantime, I'm going to bring Huzefa and Muhammad Hamza on the stage. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम यासिर भाई, कैसे हैं? मेरा ये क्वेश्चन है कि जो पहले क्वेश्चन पूछा ना, उससे थोड़ा सा रिलेट करता है कि जो हम कंटेंट बना रहे हैं, हम मतलब कौन सी स्ट्रेटजी लगाएं कि जो हमारी जो ऑडियंस है उनको रेजोनेट करे और मतलब जो कन्वर्जन करनी चाहिए। लोगों को पता नहीं है, शफीन इज वन ऑफ माय ओल्डेस्ट स्टूडेंट्स जिन्होंने मैं कहता हूँ जिनको मैं भी गाइड करता रहा, खुद भी मेहनत करती रही। आई थिंक मे बी 2 years समथिंग, एग्जैक्टली मे बी 2 years। माशाल्लाह यू हैव जी जी, Yes, एक मैंने तक congratulations. आप आ गए। से किया था, या मैंने मतलब जो फेसबुक का स्टार्ट मेरे जो मेंटोर हैं वो यासिर सर हैं, और इनका पेड ग्रुप है व्हाट्सएप के ऊपर। हमें कोई भी मसला होता है हम वहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं, ये इमीडिएटली हमें आंसर दे रहे होते हैं। वलीद भाई भी इसमें हैं और काफ़ी ज़्यादा। तो मेरे फर्स्ट मेंटोर ही यासिर सर है। थैंक यू फॉर Mashallah. Huge round of applause for Ahmed Bhai for doing such a good work. Thank you so much, Ahmed Bhai, for helping the community, helping them become literate with the skills that matters the most in the market right now. So thank you so much for doing the amazing work, and yeah, we appreciate you, brother. And you can जज़ाकल्लाह continue. खैर ब्रो।
अच्छा, मैं क्वेश्चन का आई शुड आंसर द क्वेश्चन दैट व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट वी शुड क्रिएट टू रेजोनेट विद द ऑडियंस. अच्छा, ओवर हियर आई पॉइंट आउट वन थिंग जो बड़ी कॉमन है दैट मी बीइंग वेरी ओल्ड एंड एक्सपीरियंस्ड एंड I would say maybe in a lot more terms higher than a lot of people, but you don't see me around because I'm not posting content. I'll tell you what is the logic of creating content today and how we should do it. So since ChatGPT came, everybody went crazy, everybody went ballistic. Now with ChatGPT, and there are alternates to ChatGPT as well. I don't remember the tool's name, but yeah, Copilot. Copilot is on your Windows 12 or Windows 11 whatsoever, right? So you went over there, you ask it, you just give it a prompt that, I work in this specific niche, like this is my niche, and I want to create content ideas. Give me 10 content ideas, right? And then you have have a Canva Pro account, and you just go over there and create bulk create video. You all have might already seen it, right? So it creates content for you automatically, right? And you publish it on LinkedIn and everywhere, and people will start interacting with you. Just need to connect with them on whatever platform. You just need to, if it's social media, if it is like whatever you're doing, right? Whether e-commerce or something, you just need to use ChatGPT and all these things and post these things. So it would basically make you look like you are a genius and you're awesome in this field, and that is what you need. This is what kind of content you need to for people to interact with you. It will get their attention. The second option that you do over here is that you either make videos yourself, right, talking about something, following the same script, but you just talk it out. And the third option is that if you have produced results, for example, you know what kind of case study we make, you make, I make, right? This is the amount we spent, this is a screenshot, this is the number we made, this is the basic strategy you applied, or just write whatever you can so that you know so that you look like you have a lot of information. People will start to resonate with you. Why? Because they will consider you a genius, a master automatically in that field. Because the words that you write with AI, they sound very fancy. And I'm being very honest with you, it is a tool that has fooled the world. I don't use that tool, but in order for anybody to think that you are good, or people to resonate in short term, you need to do this, because this is how you create authority now, right? You let them think that you are a genius until you actually become a genius, right? So I'm being sarcastic over here as well, but at the same time, you use these tools to just give out information, and you just interact with people, nothing else, with a good DP and everything. And the people will resonate with you wherever you go. Instant celebrity, instant information giving, instant master of the field. People have accepted, right? So this is how the world works right now. And if you follow this, it will make things advance for you. But if you honestly ask me, Shameen, whatever you are currently doing yourself, it is that two is also good enough to stand out from the competition, and that is something that you're already doing. So you understand what I'm trying to say here, everybody. Yeah. So basically, staying and pivoting with where the market is going is matters the most. So this is what we have to do. Keep with the momentum. At the same time, keep doing what you're doing and keep learning. Thank you so much, Ahmed bhai. I'm gonna go with The most important thing is to keep posting about the things that you're doing, even if you got good sales in a day. Take a screenshot, post about it. Like, I'm a okay. person who has thousands of screenshots in his phone right now. I don't post them because when I post them, people will interact with me that either give me a course or either give them a client. So you need to have another end of the side where either you make them a client or you sell them something, or just any kind of opportunity, right? So that point needs to be there regardless of what you're doing. But post about it. That is the way. And you post about it smartly that people interact. Don't post about it blindly. Like, I post blindly because I don't care. People will come by themselves for me because I'm at a different level, right? But for people who are starting out, people who are growing, people who want to grow in the right direction, right? Just use the AI tools and apply them to your content. Things are gonna go good for you, right? So this is the answer. Okay. Thank you so much for the wisdom. And I'm gonna go with I think Josefa. You can unmute your mic and ask the question if you might have. Hello, Assalamu alaikum.
Can you hear me clearly? Yes, sir. Okay, so my question is that I'm doing a media buying and working as a solo. So I might outsource some work like other stuff that is like designing, etc. So if I am excelling in media buying and I'm going from as a solo freelancer to a agency stage, so asking from Yasir Ahmed from his experience, what it is better to stick to any specific niche. Like I am providing services in for e-commerce stores, Facebook ad services, Meta advertising for e-commerce stores. Like it is the D2C brands. But should I pick any few niche like supplements or fitness related brands? There are uh, my first option is to choose any niche, or second option to go with any niche. Like what it is better to start like Perfect. I'll answer your question. It is a very excellent question, bro. I'll be very honest. Very nice answer. This means you actually know what you're doing, which is very important in our field. Now, I'll tell you the difference because I had recent experience of working with one of the biggest firms. I worked with them for 3 months. It was one of the biggest agencies, law agents. Like they used to market for lawyers, right, of US. They're based in Dubai. They're based in Pakistan. They are actual based in Los Angeles, and it's a award-winning agency. This and that. So since I'm in Dubai, I had the experience of working with that owner there because he was initially from Karachi, but everything he did was in LA. So one thing that he told me, right, and I will relate it to a lot of things that all of us old marketing guys would agree to. So when, for example, you're doing e-commerce stores right now, you might be doing private label, promoting private label, or you might be promoting white label. You might be promoting that in a specific, you could say region. Maybe you're doing GCC and KSA. Maybe you're doing Pakistan. Okay. Now the question is, if I'm in a specific niche and I'm adding more things, so what is the difference? So the biggest difference is when you're working in a niche, the scaling for that business is very, 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 very fast. Now I'll relate it to something that our old marketers know. Now all of us old marketers know a guy named Ty Lopez, right? So when I was starting in 2015, 2016 maybe, yeah. At that time I saw Ty Lopez's video in which he said, this is how you create $1,000 agency. So you go to somebody, you tell them that you guys are like a car dealership or a gym or a dentist, right? Or a chiropractor. You tell them, okay, I'm gonna run ads for you. This is the budget. You do not pay me for a week or 10 days, right? Not for a month. Week, 10 days, maximum 2 weeks, right? You run ads for them. You run it in a specific way that this is the offer, this and that, right? Now, for example, and you don't pay me. That is the catch. Okay, you're like, okay. You spend $1,000, $500, whatsoever. Yeah. If it's in PKR, 20,000, 30,000, right? You spend that amount, you don't get results. You're like, okay. You go to the second client, you do the same thing, you get results. You go to the third client, you show that results, the video that you made from the second client. You go to the third client, you say, I'm doing that for another company. We're getting these results. This is how their business increased. We have a case study. I can do that for you as well. So at that point, you can charge them money, right? Or you can still do free. But when it is the same domain, it's saying that I'm already doing it for this XY business. I can do it for you. It is easier for you to convince people because you have case study. So from 2 clients, you go to 10 clients in a matter of months. Every client is even if it's giving you $500, you do the math. You are maybe you're a millionaire in Pakistan already, right? But it is a good amount. So now consider this one niche, right? One niche, you put it aside. Now you're gonna do another niche. So when you're starting out in another niche and you wanna be committed to that niche, right? So you have to reinvent the circle again. But the difference is that you now know that what I need to do and what I don't need to do. So e-commerce is different from lead gen. E-commerce in UAE and KSA is different from e-commerce in UK and USA, right? Because the ad costs are different, the product costs are different, delivery methods are different. So long story short, if you're looking to scale, hire in-house people, right? So that they are more manageable and get more clients in that specific niche. Easiest way to scale. But if you're going for more niches, then you need to make sure that you grab one niche and then excel at it
instead of going on multiple niches at the same time, because that will slower your growth. At least have 4 or 5 clients in specific one niche minimum. Once you have 5 clients, you have experimented enough, you have done enough, and then get more clients, so that will scale your business. Otherwise, you will keep on switching businesses or clients niche, and you will, in the end of the day, you will be frustrated that the agency business is not working for me, or even if it's working, I cannot manage it anymore because it's killing my brain. So for you, my friend, this is the advice. ई कॉमर्स में जो भी आप कर रहे हैं, कोशिश करें और क्लाइंट्स ऑन बोर्ड कर लें, एटलीस्ट अपने पास रिसोर्स ऐसी रख लें जो वो काम पूरा करके दे दे आपको, आपका हैक्टिक कम। देन आप सेकंड निश के ऊपर फोकस करें और फिर उसको सेम तरीके से ग्रो करें। अगर आपने सेम तरीके से ग्रो कर लिया, ट्रस्ट मी ऑन दिस भाई, इतना पैसा आपके पास आ जाएगा, इतना पैसा आप साइड में बना लोगे कि यू विल बी अ प्रॉपर एजेंसी ओनर ऑफ आवर इंडस्ट्री। Okay, perfect. I would have 1 or 2 parts of it. मैं इसको उर्दू में पूछ सकता हूँ। तो फर्दर क्वेश्चंस के पार्ट हैं, अभी किसी और के क्वेश्चंस का मतलब अगर नहीं है तो मैं इसको पूछ सकता हूँ। You can ask, and then I will ask Hamza to come over here and ask his question. अच्छा यासिर भाई, अच्छा दूसरी चीज़ इसमें एक ये है कि अगर मैंने कमेंट कर दिया है कि मैं ई कॉमर्स के स्टोर्स के साथ ही काम करूंगा और एक स्पेसिफिक नीच है कि ये सप्लीमेंट ब्रांड्स हैं, इसके साथ ही काम करूंगा। अब दूसरा मसला ये आता है कि अब दूसरे भी मतलब एक्वायरिंग करने में अब स्टार्टिंग स्टेज ऐसी होती है, अगर स्टार्टिंग में आप कह लें या बिगनर या इंटरमीडिएट स्टेज, तो दूसरे भी अगर क्लाइंट्स आते हैं आपके पास लीड चैन के अगर आते हैं तो हम उनको मना तो नहीं कर सकते ना, तो पैसे तो चाहिए होते हैं। तो उसकी वजह से अब वो वाले भी आ रहे हैं, ऐड ऑन होते जा रहे हैं। मतलब करना तो हमें यही चाहिए कि उनको एक्सक्लूड कर दें, ताकि एक ही नीच के हमारे पास लाइन लगी हो कि भाई मतलब ये ई कॉमर्स है और ये नीच के क्लाइंट है हमारे पास। तो इसको कैसे टैकल किया जाए? मैं बताता हूँ आपको, मैं आपको बड़े अपने नुकसान से बताता हूँ। पहले इस चीज़ को आंसर कर देता हूँ, फिर आप नेक्स्ट चीज़ पूछ लेगा। अच्छा यार, मैं आपको इसका बड़ा एक ऑनेस्ट आंसर दे रहा हूँ, वो ये है क्योंकि इसमें मैंने मिस्टेक करी है बहुत। मेरा आई हैव द एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद एज अ फ्रीलांसर एंड एवरीथिंग व्हाटसएवर, राइट। आई हैड माय एजेंसी थिंग इन 2015 बहुत पुरानी बात है, मतलब 9 साल पुरानी बात है। 9 साल पहले मैं कहाँ था मुझे सही से याद भी नहीं है, बट 9 years ago or at least 8 years ago I was into my own agency thing. What mistake I did was later on जब मैं आगे आ गया तो मैंने कहा यार I don't want to work with specific kind of clients, ठीक है, और मैंने उन्हें एक्सक्लूड कर दिया regardless of their business। मैंने वो क्लाइंट्स, समझदारी ये होती है कि मैं पार्टनर करता किसी और मार्केटर के साथ और मैं उसको वो क्लाइंट्स देता, हाँ बशर्ते ये कि मेरी उस इंसान से सही वाली पार्टनरशिप हो, धोखेबाज ना हो, ठीक है। सेकंड चीज ये, क्योंकि अगर वो आपके पास आ रहे हैं आपके नंबर देखकर, तो आप उनसे ऑनेस्ट हो, बताएं कि यार आई हैव नॉट डन दिस बिफोर बट आई कैन डू इट फॉर यू, और ये चीजें इफ एनीबडी दे आर ऑलरेडी पुटिंग देयर ट्रस्ट इन यू कि आप कर दें, आपके नंबर दिख रहे हैं, मैं बोलूंगा आप उनको अवॉइड नहीं करें। आप अपने पास या तो रिसोर्स हायर करके रख लें स्पेसिफिक उस नीश की जिसके पास केस स्टडीज हो, जिसके रिजल्ट हो, ठीक है, या फिर अपने पास इन हाउस डालें या फिर अपने पास जो है जैसे भी आप फ्रीलांस करते हैं वैसा करें। लेकिन फिर उस क्लाइंट के लिए आप उसको इसी डील कर रहे हो जैसे वो आपका डायरेक्ट क्लाइंट है, ठीक है, ताकि उसके अंदर आपकी पर्सनल लर्निंग हो। तो आप उनको कटाएं मत क्लाइंट को, मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ। मैंने इसी तरीके से लाखों का बिजनेस हर महीने मैंने साइड में कर दिया, मुझे रिग्रेट नहीं है कोई सी भी, क्योंकि उस पॉइंट पे मैं क्लाइंट से वर्क करने से बोर हो गया था। बट द ओनली प्रॉब्लम वाज इफ आई हैड अ प्रॉपर टीम ऑन इट, जिसमें मैं कतराता था लोगों को हायर करने में, बिकॉज आई गेट फ्रस्ट्रेटेड विद पीपल वेरी फास्ट समटाइम्स, बिकॉज मेरे एक काम एक्सेप्ट करने की वो होती है कि यार आप इस लेवल का काम डिलीवर करो, उससे नीचे आप डिलीवर कर रहे हो तो फिर थोड़ा सा सीन ऑफ हो जाता है, राइट। तो find right resources with you or partner with the people who are working in that niche without people who don't bullshit, who actually deliver, ठीक है। क्लाइंट आता जाता रहता है बट आपकी रिलेशन और वो चीज़ खराब ना। एंड व्हेन यू आर ऑनबोर्डिंग दैट क्लाइंट, ठीक है, तो थोड़ा अल्लाह का नाम लें और थोड़ा सा रिस्क लें, कोशिश करें आप उसके लिए भी काम करें। उससे दो चीज़ें हैं, भले आप किसी और को नहीं कर रहे, खुद कर रहे हैं, उससे ये है कि यार आपकी लर्निंग का स्कोप इंक्रीज होगा, ठीक है, याद रखिएगा। एज अ मार्केटर आप बेटर होंगे, ये पाकिस्तान में कॉमन चीज़ है, राइट। दिस इज वन थिंग दैट आई स्पेसिफिकली फील लाइक आई स्टैंड आउट फ्रॉम एनीबडी। मैं उस चीज़ को मार्केट नहीं करता, ना मुझे उसके ऊपर कोई बड़ी अप्रिसिएशन, कोई अवार्ड, कोई इवेंट्स में इनवाइट मुझे नहीं मिलता, राइट। आई एम इवन आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान तो खैर फर्क नहीं पड़ता। बट पॉइंट क्या है, जब आपकी स्कोप ऑफ वर्क इंक्रीज होगा ना, तो आप एक टिपिकल बंदे से डिफरेंट होंगे,
आपको लीड जेन भी आता होगा, भले आप स्पेसिफिक निशेस पे करते हो, डज नॉट मैटर, ठीक है, सबकी लर्निंग होती रहती है, बट आपको लीड जेन भी आता होगा, आपने क्या नाम है, आपको ई कॉमर्स भी आता होगा, आपको कोई तीसरी किस्म की सेलिंग होती होगी वो भी आती होगी। आप सिर्फ एक स्पेसिफिक चीज़ पे चिपके हुए नहीं होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ मार्केट का ट्रेंड ये है कि जब अमेजोन आएगा तो सब अमेजोन बेचेंगे और सिर्फ अमेजोन की बात करेंगे जब तक वो अमेजोन मार्केट से ड्रेन होकर खत्म नहीं हो जाएगा। उसके बाद सब लोग ई कॉमर्स के पीछे पड़ेंगे और ई कॉमर्स की स्पेसिफिक चीज़ के पीछे पड़ेंगे और उस चीज़ को प्रमोट करने के लिए एक स्पेसिफिक टर्म यूज़ कर लेंगे जिससे सब पागल हो जाएंगे। इसकी एग्जाम्पल है शॉपिफाई। शॉपिफाई एक टाइम होता था, क्वेश्चन होते थे कि सर शुड आई गो फॉर शॉपिफाई बिकॉज उसके पैसे हैं, और शुड आई गो फॉर वर्डप्रेस। और आज का है आप शॉपिफाई कर ले, हम ई कॉमर्स कर ले, कर ले, तो कभी किसी को ये चीज़ क्लियर नहीं होती कि यार इस शॉपिफाई इज जस्ट अ प्लेटफॉर्म, राइट, एंड इट इज एन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, बट you're not doing Shopify, you're saying I do e-commerce, right? तो हमारी पट्टी पड़ती है और लोग उस पर चलते जाते हैं। I want you to either just get a resource or improve yourself and learn that skill and apply that skill। हाँ, जब आपसे हैंडल ना हो तो फिर आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं कि नहीं यार ये काम मुझे नहीं करना, ये बहुत सरदर्द है। Every task is not easy in advertising। हर किस्म का टास्क easy नहीं होता। I work with people who do real estate, I work with people who are doing e-commerce, I work with people doing जिनका एजेंसी बिजनेस है, उनको वेब डेवलपमेंट के लिए क्लाइंट्स चाहिए। मैं तीनों के लिए काम किया और तीनों के लिए काम सेम होते हुए भी इंटायरली डिफरेंट है, क्योंकि एक जगह पर सरदर्द ज़्यादा है, एक जगह पर सरदर्द कम है, भले मैं रिसोर्स रखूँ या रिसोर्स ना रखूँ। सो बट आई नो हाउ इट्स डन, सो बेस्ड ऑन दैट आई कैन कैश आउट वट एवर माई लर्निंग इज सम अदर वे, मे बी बाई टीचिंग, ठीक है। सो आई होप आपको जो मैं कहना चाह रहा हूँ बात समझ आ गई हो, एंड यू कैन आस्क द रेस्ट ऑफ योर क्वेश्चन नाउ। ठीक है, क्लियर हो गया, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट हो गया। अच्छा, थर्ड पार्ट ये इसमें आ जाता है कि एक कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है कि अगर मैं मिसाल के तौर पे अगर आपको एग्जांपल दूं कि एडटेक ब्रांड के साथ काम कर रहा हूं और कराची में उनकी लोकेशन है, तो अगर उसी मार्केट में कराची में दूसरे एडटेक ब्रांड के साथ मैं अगर काम करूंगा तो मतलब ये होगा कि आप उनके कॉम्पिटिटर के साथ काम कर रहे हो, तो ये उनके लिए एज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर एक सेम नीच में हम करेंगे मल्टीपल्स के साथ तो ये तो एक आएगा बीच में, तो इसको कैसे टैकल कर सकते हैं? बड़ी बहुत यार वेरी 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 एक्सीलेंट क्वेश्चन यार, आपके सवालों से मुझे बड़ा मजा आ रहा है, मुझे बिल्कुल अपनी जो एक इनिशियल फेजेस थी ना वो याद आ गए। बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है, वेरी एक्सीलेंट क्वेश्चन, जो मैं कहूँगा आपके क्लैपिंग होनी चाहिए इस बात पे, बिकॉज यू आर डूइंग द राइट थिंग। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना यार दो सूरतों में होता है। फॉर एग्जाम्पल, फ्रॉम माई एक्सपीरियंस आई कुड से दैट यू आर अ वेरी एथिकल पर्सन, ऐसे लोग नहीं मिलते। अब बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अगर आपको एक काम आता है तो वाई नॉट यू कैश इट आउट ऑन 100%, बट आप नहीं कर रहे, आप बोल रहे हो नहीं यार शायद ये चीज़ सेट नहीं हो रही है, क्लाइंट के साथ भी ना बैठे मे बी, बट वो हो, तो देर इज अ वे टू टैकल इट। द वे टू टैकल इट इज दैट कि आप एक बोलते हैं ना, जैसे यार मेरे एक फ्रेंड है यहाँ पे पाकिस्तान के बंदे हैं लेकिन वो यहाँ यूएई में, तो वो क्या करते हैं कि वो पहले बहुत सारी चीज़ें, तो वो बोलते हैं कि यार पहले हम हमारी जो मतलब बंदा यही है, लेकिन वो बोलते हैं कि यार जो ये जो एड्स वगैरह क्रिएट कर रहे होते हैं, मतलब ये वीडियो एड्स, ये जो बड़े टीवी पे चलने वाले एड्स, बोलते हैं कंपनी हमारी है, लेकिन हम बोलते हैं कि यार ये एक सेपरेट कंपनी, आप इससे डील कर लेंगे, हम इनके साथ काम करते हैं तो आप इनसे डील कर लें। हालांकि वो कंपनी उन्हीं की है, उन्हीं के बंदे सब है, वो वहाँ पे कर रहे होते हैं। उसके बाद जब वहाँ से काम खत्म होता है तो फिर बोलते हैं नहीं यार अब आपका वेबसाइट वगैरह का काम है, इसके लिए आप यहाँ पे जाएं, हम यहाँ रेकमेंड करते हैं, हम खुद नहीं कर रहे, और वो दूसरी जगह पे बैठ लेता है। आपने सेम तरीके, और दूसरी जगह का मकसद ये कि अपनी ही कंपनी की अपनी ही कोई दूसरी कंपनी भी खोली हुई उन्होंने डिफरेंट नाम से, और उसमें उसको इन किया, ठीक है, बैक एंड पे बंदा एक वन कंपनी या डिफरेंट डिपार्टमेंट, आप ऐसा समझ। तो इसके लिए मैं आपको बोलूंगा कि यार आप, अगर ये आपकी रिसोर्स पर है, वही बात आ जाती है, आप इस तरीके की रिसोर्स या पार्टनरिंग करें कि वही चीज़ जो है क्लाइंट को फील भी ना हो कि वो डिफरेंट वो है, और आपका काम भी हो जाए। और अगली चीज़ ये आती है कि यार इसकी एग्जांपल ये है कि यार एक एजेंसी है जो मॉडल्स के अकाउंट्स मैनेज करती है, जुनैद अकरम के साथ काम कर लिया उन्होंने और भी लोगों के साथ काम कर लिया सेम नीच में, तो ऑफ कोर्स जुनैद अकरम और उनकी सिमिलर टाइप के कंटेंट उन लोगों को प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, क्योंकि आप एक बिजनेस रन कर रहे हो और बिजनेस एक क्लाइंट पे से नहीं चलता, और किसी बिजनेस को चलाने के लिए एक क्लाइंट इनफ भी नहीं होता अनलेस वो मिलियंस का काम दे रहे हो। वन ऑफ माई फ्रेंड वे बैक उसने अपनी एजेंसी खोली थी डीएचए वगैरह में भाई,
महंगी जगह पे खोली हुई थी कराची में। मैंने बोला भाई क्या हो गया, तुम कहाँ से आ रहे इतने पैसे? उसने बोला यार पेप्सी आया हुआ है मेरे पास लेज आया हुआ है, इस वजह से काम चल रहा है। तो वो चलता तो रहा, ठीक है, उसने हैंडल भी किया, लेकिन एक टाइम के बाद वो खत्म हो गया। क्यों खत्म हुआ भाई? वो इसलिए खत्म हो गया क्योंकि वो फिर क्लाइंट कहीं और कट के चले गए। अब आपके पास 2 क्लाइंट, अल्लाह हाफिज, नमाज पढ़ गया फिर 6-8 महीने पुरानी एजेंसी की। तो द क्लाइंट वोंट केयर यू लिव और डाई, द क्लाइंट ओनली केयर्स एज लॉन्ग एज यू गिविंग देम रिजल्ट्स। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है भाई, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ये आपके ऊपर है कि यार आप उसको कैसे लेके चलो। मतलब एक ही घर में एक ही माँ है और 2 बच्चे हैं, दोनों ट्विंस हैं। अब वो एक को कम ट्रीट करे, दूसरे को ज़्यादा ट्रीट करे, तो फिर कॉन्फ्लिक्ट है। तो वो दोनों को माँ है, वो दोनों को सही से ट्रीट करे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बच्चों को भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, माँ को भी होनी चाहिए। इट इज मोस्टली अबाउट कम्युनिकेशन। सो इट इज़ वेरी गुड यू थॉट ऑफ इट इन अ एथिकल वे। इफ दे हैव अ प्रॉब्लम कि आप उनका वो काम नहीं करो, तो फिर दोस्त क्लाइंट शुड पे यू इनफ के सेंस बन रहा हो, समझ रहे? तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे टेक्निकल होकर जाना पड़ेगा। अगर आप इसको मेरी तरह, मैं बेवकूफ़ हूँ, आपको ऑनेस्टली बता देता हूँ, इस मामले में आप दिल से सोचेंगे ना, आपका बहुत नुकसान होगा लॉन्ग टर्म में। आप उसको दिमाग से सोचें और एक शार्प बंदे के साथ उसको टैकल करें, दैट वुड मेक सेंस। एंड जब क्लाइंट आ जाए तो ऑब्वियसली यार आप भी उसमें कोई घपला ना करें, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने खुद घपला कर दिया तो फिर वो आप अल्लाह की जवाब दो। अदरवाइज आई थिंक रेस्ट ऑफ द थिंग मैंने आपको समझा ही दी है। तो वॉट एवर यू डिसाइड टू डू, I think the crucial additional resource would play a crucial part. Rest is whatever you and the client commit, regardless of them knowing कि यार ये conflict of interest is possible. Instead, tell them this will be a positive thing for them. Tell them it would be a positive thing from them. Then we don't have to waste money on a lot of experiment that we did with somebody else. ठीक है? So much for the wisdom, Amazon. And we are, since we are already over time, I'm gonna take at least, I'm gonna based on your availability, I'm gonna ask 3 people to ask their question. Hamza bhai, Hamza Taf bhai, just a second. Before you, there was Muhammad yeah, I'm Muhammad available Hamza till bhai. my kid comes out. Oh, okay. No. Muhammad Hamza bhai, you can unmute your mic and just a second. So, ठीक हो गया हमजा भाई, हमजा भाई बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, बहुत सारी चीज़ों से मैं रिलेट कर सकता हूँ। तो पहली बात ये हो जाती है कि जो मैं आपकी बात समझ पाया हूँ कि ये है कि आप दूसरे जिनके अपर को फाइवर चल रहे होते हैं उनका ये होता है कि हम आउटसाइड भी वर्क लें, और उसके लिए उनको चाहिए होता है, हर बिजनेस स्केल करना चाहता है। आप फाइवर अपवर्क जब तक आपको सर पे चढ़ा रहा है तब तक चढ़ाएगा, एक दिन बोलेगा अल्लाह हाफिज बैन हो गए आप, तो आप जीरो पे आएंगे, ठीक है? इट इज़ फॉर एवरीबडी। मेरा यूडीमी के साथ भी हो सकता है, मेरे फेसबुक अकाउंट के साथ भी हो सकता है भाई। तो हम साइड के अंदर वो चीज़ अपनी किस तरह बिल्ड कर रहे हो, तो यार बेस्ट तरीका ये है कि यार जो भी एजेंसी और वो है वो अपनी वेबसाइट लैंडिंग पेज, जिसके ऊपर मैं बोलूँगा मोस्ट प्रॉब्ली लैंडिंग पेज के ऊपर, ठीक है, वो जेनेरिक वेबसाइट ना हो, एक प्रॉपर फनल बेस्ड लैंडिंग पेज हो, जो आप ऑफ कोर्स वर्डप्रेस पे एलिमेंटर से भी बना सकते हैं, जो स्पेसिफिकली ऑप्टिमाइज हो आपके क्लाइंट्स लेने के लिए, जिसके ऊपर आपके एग्जिस्टिंग काम का प्रूफ मौजूद हो, ठीक है? ये हो गई नंबर 1 चीज़। दूसरी चीज़ होगा ये कि अगर पेजेस और प्रोफाइल वो सब न्यू है ना, तो इट इज़ नॉट अ बिग प्रॉब्लम, लेकिन आपकी जो भी एडवर्टाइजिंग की फनल है वो बहुत मैटर करती है, और आप किस तरह एडवर्टाइज कर रहे हो ये भी बहुत फ़र्क पड़ता है। लेट्स टॉक अबाउट मेटा, कि यार मेटा से आप किस तरह लीड्स, मेटा में आप फेसबुक से वगैरह बहुत कचरा आता है, इंस्टाग्राम पे आपको थोड़ी क्वालिटी लीड मिल जाती है। इट इज़ डन थ्रू 2 ways। 1,
दैट यूर पेस्टिंग इंफॉर्मेशन बेस्ड कंटेंट, भले वो लिंक्डइन पर हो, भले वो कहीं पर भी हो. फॉर एग्जाम्पल आपकी प्रोफाइल है, आपकी प्रोफाइल पे मैंने अभी इतफाकन क्लिक करके देख लिया तो आपका वो आ रहा है कि 1-on-1 सेक्शन. उस चीज़ को आगे करने के लिए आप लिंक्डइन के ऊपर कंटेंट भी पोस्ट कर रहे हो, फेसबुक पे भी कंटेंट पोस्ट कर रहे हो, वीडियो पोस्ट कर रहे हो. तो अगर आपका कंटेंट अच्छा है और ऐसा है जो ऑडियंस से रिलेट करता है, तो दे विल कॉन्टैक्ट यू व्हेन यू आर रनिंग द एड. सेकंड आ जाती है बात ये कि यार if you're directly, like for example if you're running the ad, what they're seeing, और if you are reaching out to the right people, तो मैं बोलूँगा यहाँ पे आ जाता है ट्रिकी पार्ट. क्योंकि जब मेटा से पहले करते थे लीड्स, वो थोड़ी सी एक पहले बहुत अच्छी क्वालिटी आती थी. अब क्या हो गया कि हर कोई कर रहा है, तो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट भी महंगी हो गई और लीड की क्वालिटी भी बिल्कुल शिट हो गई. तो लीड की क्वालिटी भी अच्छी हो, एटलीस्ट अगर सीपीए ज़्यादा अच्छा हो, तो उसके अंदर मैं आपको रेकमेंड ये करूंगा कि यार आप पहले आपकी सक्सेसफुल जो केस स्टडीज है ना, उनको यूज करते हुए अपने एड्स रन करें और कस्टमर को प्री क्वालिफाई करें इस तरीके से कि आप उनको फ्री की कोई एक चीज दे दें. मैं आपको एड अकाउंट का ऑडिट दे रहा हूँ, ये दे रहा हूँ, वो दे रहा हूँ, कोई एक फ्री की चीज दे दें अगर आप मेटा के थ्रू कर रहे हैं. ठीक है, अगर आप गूगल एड्स के थ्रू कर रहे हैं तो ऑब्वियसली गूगल एड्स के अंदर आप सर्च एड चला रहे होंगे जो लीड जनरेशन फॉर्म पे या वेबसाइट पे ही जा रहा होगा आपकी. तो जो सर्च बेस्ड एड्स होते हैं, अगर आपको गूगल एड्स प्रॉपर्ली आता है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं तो कर चुका हूँ राइट, और मैं कर भी रहा हूँ रिसेंटली दुबई में बाहर की एजेंसी के लिए राइट. तो कोई भी सर्च कर रहा होगा, आपने एड कीवर्ड प्लानर से सारे कीवर्ड्स देख लिए और उनको प्रॉपर बंडल करके अच्छी सी ऑफर बना के आपने लगा दिया और वो लोग लैंडिंग पेज पर आप इन्फॉर्मेशन फिल कर दी. लीड कॉस्ट हाई होगी, लेकिन एट द सेम टाइम आपकी जो उसकी कॉस्ट होगी, क्या नाम है, उनसे मतलब जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट वगैरह करते हैं उसकी कॉस्ट भी हाई होगी, तो आप विन एंड विन में होंगे. बट अगर ये दोनों ही चीज़ें आप ट्राई कर चुके हैं और ये दोनों ही चीज़ें फेल हो चुकी हैं, तो मैं फिर बोलूँगा कि यार आप ज़्यादा फोकस करें केस स्टडीज़ के ऊपर और उन केस स्टडीज़ के थ्रू मैनुअली उसी नीश में क्लाइंट ढूंढें. अब वो आपको लिंक्डइन से बहुत अच्छा काम आपका हो जाएगा या फेसबुक ग्रुप से अच्छा हो जाएगा. मैनुअल होगा काम लेकिन अच्छा हो जाएगा. So I think this is the advice I can give you over here. Thank you so much. Hamza, I hope you got your answer. And हमजा किस मार्केट के अंदर कर रहा हूँ, सॉरी बात काट रहा हूँ तुम्हारी, किस मार्केट के अंदर? यूके का बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है यूके का. मैं तुम्हें बता देता हूँ भाई. यार यूके की इनकी जो है ना कुछ साइट्स हैं. एक तो होता है कि यार आप यार यूके का मैंने यूएस का किया था, मुझे याद है मैंने यूएस का किया था. क्लाइंट से अच्छा काम हुआ था, फिर क्लाइंट ने फटे कर लिए, कुछ मुझे याद नहीं. तो यूएस के अंदर उस वक्त ये किया था कि जो उनकी ये वेबसाइट्स होती हैं ना सर्चिंग की, कुछ जिलो नाम था, क्या था मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन यूएस की आप सर्च मारोगे ना और यूके की सर्च मारोगे बाय हाउसेज इन दिस स्पेसिफिक एरिया, तो वेबसाइट्स और एड्स तुम्हें दिख जाएंगे. उन साइट्स को तुम अपनी टारगेटिंग में डालोगे ना तो तुम्हें फिर ऑटोमेटिकली उन कोर ऑडियंस पे रीच कर पाओगे तुम. ठीक है. दूसरी चीज़ ये है कि जो भी तुम अपना एड रन कर रहे हो ना लीड का, उसके अंदर टर्म रेंटिंग अ हाउस, बाइंग अ हाउस, ये अपने एड कॉपी के अंदर डाल के देखना, तो ऑटोमेटिकली ना जो लोग हु आर प्रॉब्ली लुकिंग फॉर दिस, उनको ऑटोमेटिकली जो है वो रीच कर जाएगा. एंड पीपल हु आर ऑल्सो इनटू मॉर्गेज, मॉर्गेज की जो कीवर्ड है मॉर्गेज, यानी वो कह रहे ना कि आपने घर ले लिया और फिर आप पैसे भर रहे हो घर के स्लोली करके लोन के थ्रू, समथिंग लाइक दैट, उसको भी तुम डालोगे तो उससे भी तुम्हारा काम हो जाएगा. बट अगेन यूके की मार्केट के अंदर एक बंदा था, वेल्श आ रहा था उसके नाम, यूट्यूब पे है, आई डोंट रिमेम्बर, जॉर्डन वेल्श था या क्या था. उसकी कोई सी भी रीसेंट वीडियोस देख लो जिसमें मे बी टॉक अबाउट चैटबॉट, मे बी अ फ्यू मोर थिंग्स, और उन वीडियोस को फॉलो करते हुए जो है अपने कैंपेन्स को ऑप्टिमाइज कर लो. सो यू विल, अभी 1 मंथ हुआ है, 6 मंथ बाद तुम एक अच्छे लेवल पर होगे. सो दिस इज माई एडवाइस. क्लाइंट को तुम्हारी पप्पी कर लेनी चाहिए भाई, सच बता रहा हूँ. क्लाइंट को बोलो कमीशन थोड़ा सा तुम्हें. मैं ये बात बोल रहा हूँ, क्लाइंट से बोलो थोड़ा सा कमीशन दे दे. और अगर क्लाइंट इस पे भी रो रहा होगा ना कि यार 4 लीड्स
मेरी नहीं हुई। तो क्लाइंट को बात समझा, सर आपने इतने की डील कन्वर्ट करी है, ड्यू के लॉ से देखो कि रियल एस्टेट ब्रोकर का कितना % बोलता है, और फिर उसको बताओ सर इतना पैसा तो आपने ऑलरेडी बना लिया, तो अब अच्छा सा रिव्यू भी लिख के दे मुझे, और ये केस स्टडी भी आप यूज़ करो आगे क्लाइंट्स लेने के लिए, और इसी चीज़ को रिंच एंड रिपीट करते रहो जब तक कर सकते हो। और स्लोली अपने क्लाइंट्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ी सी एडवांसमेंट करो कि यार कोई लीड क्लोज हो जाती है, कुछ हो जाती, तो इतना बोनस वगैरह कुछ रखो। तो ये इससे आप स्केल कर पाओगे, आपकी जेब में ज़्यादा पैसा आएगा। हम्म हम्म, सही है। Great thing. Thank you for the great question, Hamza bhai. Thank you so much. Thank you so much, Ahmed bhai, Yasir bhai. Hamza, I'm gonna last question from Hamza Altaf. Hamza Altaf, you can unmute your mic and ask your question. Assalamu alaikum. Thank you so much for having me here. यासिर सर से मेरा क्वेश्चन है, फर्स्टली तो सर मुझे बताएं काइंडली कि ये जो फनल्स हैं क्या वो 2024 में वर्क कर रही है अभी भी, और उसके फनल्स अलावा किस सेंस में बोल रहे हो? सेकंड क्वेश्चन इसके बाद बताइएगा। फनल्स किस सेंस में आप बोल रहे हैं, पहले तो मुझे ये बताएं। फनल इन सेंस कि आपके पास मतलब अक्सर अभी देखा गया है कि अगर आप एक ऐड को रन करते हैं और खुद ब खुद जो है वो फेसबुक आपके मोफू और बोफू के जो कस्टमर्स हैं उनको भी वो ऐड शो करवा देता है, ठीक है, कुछ टाइम के बाद। तो मैंने खुद भी इस चीज़ को देखा, मेरे कुछ ऐड जो है वो सही है, फ्रीक्वेंसी हाई हो गई होगी ना आपकी ऑटोमेटिकली ऐड की। बिल्कुल फ्रिक्वेंसी भी 2 तक गई थी। नहीं, बहुत एक्सीलेंट है, सही है। बट तो ये मैं है कि आपको पहले इसका जवाब दे देता हूँ। हाँ, बात पूरी करें फिर मैं करता हूँ। हाँ तो जी सर ये क्वेश्चन मेरा ही है, फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है यार हमजा भाई, मैं आपको आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में टेक्निकल टर्म्स से हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं टर्म्स। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ मैं टोफू पोफू ये सारे टर्म्स यूज़ ना करूँ तो वो फनल नहीं है। मैं ये बोलूँ कि यहाँ पे आपने डायरेक्ट दिखा दिया, यहाँ पे रीटारगेटिंग कर, दिस इट इज़ सेम एज द फनल, लेकिन फिर हमारी ऑडियंस को लगता है कि फनल एक डिफरेंट है। मैं आपको बताता हूँ एक सीक्रेट, वो ये है कि यार अगर आपका ऐड अच्छा है ना, ठीक है, आप कुछ भी बेच रहे हो, प्रमोट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन ऑडियंस उससे इंगेज कर रही है ना। अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जब मैं अपनी पर्सनल ब्रांडिंग, मैं बहुत लेजी हूँ अपनी ब्रांडिंग अपनी उसके ऊपर, ठीक है, मैं नज़र भी नहीं आता, मैं बहुत सारे लोग मुझे जानते नहीं, मैं नज़र नहीं आता बहुत सारी चीज़ों में जो नज़र आना चाहिए आपको, ताकि लोग पहचाने आपका बिजनेस बने व्हाट्सएप, राइट। लेकिन मेरे ऐसे कुछ वीडियोस हैं पर्सनल जो मैंने एड्स वगैरह में यूज़ करी है, नॉर्मल वीडियोस है, उसमें मैंने कोई स्क्रिप्टिंग वगैरह कुछ भी नहीं किया, नॉर्मल रिकॉर्ड करके अपलोड करके, उनके ऊपर मेरे पास 20% तक का CTR आया है, 20-25% तक का, एवरेज 14%, समझ में, बहुत बड़ा नंबर है और बहुत लंबी कन्वर्जन भी हुई है। जब मैं वो एड्स रन कर रहा होता हूँ, या आप किसी भी किस्म का एड रन कर रहे हो, अगर वो ऐसी चीज़ है जिसका फैंस बन रहा है और ऑडियंस उसको लाइक कर रही है, लाइक इन अ वे कि यार हाँ यार ये अच्छा है, मतलब ओके, कमेंट भी कर रही है, कुछ भी है, इंटरेक्ट कर रही है इसके से, तो आपको फनल की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली खुद सेल्फ फीडिंग हो जाएगा, खुद राइट ऑडियंस को रीच हो जाएगा। और आपने कभी कोई क्रिएटिव में चेंज नहीं करना, कुछ नहीं करना। हो सकता है कि कभी आपका CPM थोड़ा ऊपर हो जाए, CPC से ऊपर हो जाए और 2-3 दिन बाद खुद नीचे हो जाए, क्योंकि वो एक डिफरेंट ऑडियंस को शो हो रहा है, जो थोड़ी सी कह लें कि हायर क्वालिटी ऑफ ऑडियंस है, जिसको विन करने के लिए आपको ज़्यादा पैसे लगाने पड़ते हैं, ठीक है, कचरा ऑडियंस को हटा के, तो वो खुद सफिशिएंट हो जाता है। फनल्स वर्क करती हैं, ठीक है, और फनल्स वर्क नहीं भी करते। इट इज़ ऑल अबाउट व्हाट यू आर प्रमोटिंग एंड हाउ यू आर प्रमोटिंग। अगर आपका मैसेज आपको लेके जा रहा है, आपका जो कंटेंट है वो लेके जा रहा है व्हाट्सएप पर, और व्हाट्सएप पे अच्छी क्वेरीज आ रही हैं, इसका मतलब ये सेल्फ फीडिंग, मुझे कोई रीटारगेटिंग वगैरह कुछ भी करने की जरूरत नहीं, या मैसेजेस पे लेके जा रही है, या आपको इनबॉक्स में लेके जा रही है, या बस कमेंट ही कर रहा है बस, ठीक है, लेकिन बस समहाउ आपके पास अच्छी क्वालिटी ऑडियंस आ रही है, तो वो खुद चलता रहेगा कंसिस्टेंटली। एक पॉइंट पे जाके वो पिटने लगेगा, तब ऑफकोर्स आप कैंपेन में चेंजेस कर सकते हैं। सही। और दूसरी चीज़ आ जाती है कि आप सिर्फ फनल बेस्ड, मतलब अब आप ये आपने नहीं तो सोचा कि यार ये खुद ही सब होता रहेगा, आपने बोला अब मैं जाऊँगा टेक्निकल, तब आप फनल बेस्ड करें। इसमें तरीक़ेकार ये होता है कि इसमें आपकी कॉस्टिंग वगैरह ना बड़ी कंट्रोल में रहती है, बहुत कंट्रोल में रहती है, टाइम लगता है लेकिन कंट्रोल में रहती है। इसकी एग्जाम्पल क्या है, अगर मैं अपनी अभी Udemy के कोर्सेज को सेपरेट करके
सेपरेटली अपनी साइट पर डाल दूँ कि यार आप जो है ये मैं फ्री में दे रहा हूँ, ले लो। उससे गूगल, फेसबुक वगैरह सब घुसा दूँगा, 10 घंटे का कर दूँ, तो ये प्रॉब्लम है। ठीक है, मैं तो यूडीमी वाले अपना स्टेप ऑलरेडी बहुत सारा फ्री में गिव अवे करता हूँ। ठीक है, ताकि मेरी पेड एनरोलमेंट्स ऑटोमेटिकली, ठीक है, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली अथॉरिटी भी बन जाएगी और बंदा भी आ जाएगा। और उसके आगे मैं अपनी एक सेल लगा दूंगा प्रीमियम। तो मैं एडवर्टाइज कर रहा हूँ समथिंग फॉर फ्री, लोग उसको एंगेज हो रहे हैं, और उनमें से जिसको दिखेगा कि हाँ यार इसमें वैल्यू है कुछ है, वो ऑटोमेटिकली मेरी पेड चीज कर लेगा। तो ये मेरी फनल हो गई जो इनडायरेक्टली, जिसमें मेरी कॉस्ट कम हुई, जो फ्री है ना भाई, फ्री वाली चीज तो लोग ले ही लेंगे। ऐसा भी होता है कि फ्री वाली चीज की वैल्यू कम होती है, लेकिन इट इज अप टू यू हाउ यू प्रमोट इट। वैसे ये फेसबुक एड्स का मैं कोर्स आपको फ्री में दे रहा हूँ, लेकिन मैं बोलूँ ये मेरा यूट्यूब का कोर्स है फेसबुक का, ये $9 का, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कूपन से मिल जाएगा। तो जो लोग उस सेकंड वाले पे पागल हो जाएंगे ना बिल्कुल कि बस हमें चाहिए, बस मैं मर जाऊंगा लेकिन ये चाहिए, वो चीज़ आपके प्रोडक्ट को इनडायरेक्टली बहुत वैल्यूबल बना देगी। तो नॉट एवरीबडी विल बाय योर प्रोडक्ट, आउट ऑफ 100 प्रोडक्ट पीपल 1% विल बाय दैट प्रोडक्ट, योर प्रोडक्ट, बट आपकी जो मास आउटरीच हो रही होगी ना वो बहुत ज़्यादा होगी। एक और एग्जाम्पल लेता हूँ इसकी मैं आपको। हमारी मार्केट के अंदर मुझे 2 साल पहले किसी ने बोला कि यासिर तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मैं तुम्हें तरीका बताता हूँ क्योंकि मुझे नंबर्स पता है। उस बंदे ने मुझे बोला, बहुत सीनियर बंदा है, मैं नाम मेंशन नहीं करूँगा, लेकिन अगर मैं उसको सीनियर बोलता हूँ तो आप समझेंगे कि वो फिर किस लेवल का बंदा होगा। ठीक है, उन्होंने मुझे काम का कुछ नहीं सिखाया, लेकिन भाई बंदे मुझे बहुत अच्छी चीज़ें। तो ही सेड दैट यार ये स्पेसिफिक कोर्स है, ये 2,500 रुपये का बिक रहा है। अब मैं किसी के नाम नहीं लूँगा, कुछ नहीं लूँगा, ये 2,500 का बिक रहा है, और डेली का इसके ऊपर इस पे 10,000 की 10 लोग ले रहे हैं, और पर सेल को एक्वायर करने में 1,000 रुपये लग रहे हैं, स्टूडेंट एम्प्लॉयज़ को देने के लिए 500 रुपये लग रहे हैं, तो पर सेल पे 1,000 रुपया देखने आता है, और महीने के एंड में 1,500 या 2,000 बिक रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ें हो रही है, जो आपके पास मैथ की जाए तो 2 लाख रुपए तो हर महीने आ रहे हैं, लेकिन वो जो 2,500 कुछ भी नहीं है यार आज की दौर में। ठीक है, 2,500 कुछ भी नहीं है, चिल्लर है, कोई भी बाय कर सकता है। ठीक है, कोई भी बाय, हर कोई ले सकता है। 20,000 की चीज़ हर कोई नहीं ले सकता, 2,500 की चीज़ हर कोई ले सकता है, अनलेस वो बहुत ज़्यादा गरीब है। 2,500 की, क्योंकि आप उसमें क्या नाम है, 2,500 की कोई कॉस्ट है नहीं, तो आपके पास एनरोलमेंट आ गई, आपका काम हो गया। बट एट द सेम टाइम उस 2,500 की चीज़ को प्रमोट करने के अंदर जो मुझे मास मार्केटिंग मिली है ना भाई, मास मार्केटिंग पाकिस्तान की, उससे मैं बन गया हूँ सर्टिफाइड एक्सपर्ट इन द आइज ऑफ एवरीबडी। तो यहाँ पे क्वांटिटी का गेम क्वालिटी को बीट कर देता है। अब उसके आगे मैं 30,000 रुपये की, 50,000 रुपये की अपसेल लगा भी दूँ तो मेरी वो भी सेल हो जाएगी, इसमें और प्रीमियम स्टेप में सिखा दूँ। लेकिन एट द सेम टाइम दो चीज़ें हो रही हैं, एक चीज़ लो क्वालिटी लो टिकट प्रोडक्ट में बेच रहा हूँ और सब मुझे जान रहे हैं, और उससे मेरा पैसा रिकवर भी हो रहा है, और इसलिए मेरी न्यू अपॉर्चुनिटी बन रही है। ऑटोमेटिकली लोग मुझे मार्केट का मास्टर भी जान रहे हैं, क्योंकि मैं दिख रहा हूँ और लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं। तो ये एक और क्लासिक फनल की एग्जाम्पल है जो लाइव पाकिस्तान में हो रही है और चल रही है। और एक और फनल लगा देता हूँ उसके अंदर, आप किसी भी बड़े इवेंट में जाते हैं, आपको एक अवार्ड मिल जाता है, भले आप सही लोगों से कनेक्टेड हो तो आपको मिल जाता है, आप स्टेज पे भी आ जाते हो, बहुत अच्छी बात है, और अच्छी बात भी करते हैं। लेकिन फिर वो एक चीज़ से आप आगे कितनी और चीज़ें सेल कर पाते हो, ये बड़ा एक फैक्टर प्ले करता है। अब उसके अंदर कुछ ऐसे लोग भी निकल जाते हैं जिनको लोग बाद में गालियाँ दे रहे होते हैं, और ऐसे लोग भी निकल जाते हैं जो अपने लिए अपनी पर्सनल ब्रांड को फिट करके इतना बड़ा कर लेते हैं कि भाई वो ह्यूज हो जाते हैं माशाल्लाह से। So you understand the example of funnel and not a funnel over here in detail. बिल्कुल, ये बात है। ठीक है सर। सेकंड मेरा क्वेश्चन ये है कि अक्सर जो है एड्स लर्निंग फेज में आजकल बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। पहले इतना ज़्यादा इशू नहीं आता था, मेरे साथ भी, मेरे भी कुछ एड अकाउंट्स हैं जिनमें लर्निंग फेज में जो भी आप एड चलाएं तो लर्निंग फेज में चला जाएगा। तो इसकी क्या वजह है, इसका क्या मतलब, इसको किस तरह से सॉर्ट आउट करें? बात का जवाब देता हूँ यार। लर्निंग फेज जो है ना, प्रॉब्लम अगर वो आपको फेज और रिजल्ट दे रहा है, प्रॉब्लम तब है जब वो लर्निंग फेज में और आपको रिजल्ट आपके इम्पैक्ट हो गए हो, सीपीए बढ़ गए हो, सब होता है। लर्निंग फेज का मकसद ये हुआ कि वो बोल रहा है आपने आपका कोई सा भी ऑब्जेक्टिव है कैंपेन का, भले वो मैसेज हो, भले वो लाइक्स हो, भले वो फेज हो, उसका सिस्टम कहता है फेसबुक का कि यार अगर आपके एक वीक में आई थिंक मुझे 50 कन्वर्जन्स कहता है। 50 कन्वर्जन मतलब वो लाइक क्या है, कमेंट, अभी अपडेट आई है आई थिंक हो सकता है मेरे अकाउंट पे अब तक ना डाली हो, या फिर मैं भी कुछ नहीं, अभी कल परसों मैंने एक जगह देखी 10 कन्वर्जन्स 3 डेज में। यस यासिर भाई, 10 कन्वर्जन्स अब मोस्टली। अच्छा न्यू आई है,
अच्छा Yeah. अच्छा यार राशिद भाई इस पे ये वाली मुझे दिखाइएगा, मुझे लग रहा है मेरा कुछ ऐड एक अकाउंट्स में। कुछ एड अभी अकाउंट्स पे यहाँ ये रोल होती है, रोल आउट होती है। हाँ तो एक सेकंड तो अच्छा खैर यार बस ये मैं लास्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ। तो yes, yes. इसके अंदर देखें अगर नंबर ऑफ कन्वर्जन इसलिए मांगता है ताकि आपके पास आपके उसने कहा कि 10 कन्वर्जन चाहिए, आपने कहा ठीक है। अब 10 फेल के अगर 10 फेल आपकी सही टाइम पर एक हफ्ते के अंदर आ गई प्रॉपर, तो उस जो कैंपेन है ना वो लर्न कर लेगी आपका कस्टमर कौन है। अगर उसने लर्न कर लिया ना आपका कस्टमर कौन है, तो ऑटोमेटिकली आपके फेल जाते हैं और कुछ भी नहीं। तो आप उसको कंप्लीट करा दें, इट विल स्टार्ट गिविंग यू बेटर एंड बेटर एंड बेटर रिजल्ट्स। और नहीं कंप्लीट होता और उसके बावजूद भी रिजल्ट आ रहे हैं, चलने दें, फिर इग्नोर करें इसको। क्योंकि जो मेटा है ना कभी कभार बिल्कुल ऊट पटांग चीज़ें भी करता है, ये उन ऊट पटांग चीज़ों में से एक है। उसमें ठीक है, सर तो आपने टेंशन भी लेनी है, आपने करते नहीं। इसमें अगर हम एक ये कर ले कि एक अलग से एड सेट जिसके अंदर हम ऐड टू कार्ट का यानी उसको कर ले, ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट कर ले ताकि जल्दी से हमारी वो वेरी स्मार्ट। कंप्लीट हो यस, जाए। ये आपने बहुत अच्छी चीज़ करी। ये जब मैंने ई कॉमर्स यहाँ पे मेरी सबसे पहली ट्रेनिंग 8 घंटे की जो बनी थी पाकिस्तानी मार्केट के लिए, जब मैं सेल्स कंपनी के साथ काम कर रहा था ड्यूरिंग कोविड, तो उसके अंदर जब मैंने अपनी सबसे पहली वीडियो रिकॉर्ड की थी कि यार आपने क्या कैंपेन चलाई, तो मैंने उस पर सबको कहा था कि यार आप एड टू कार्ट पे चलाएं, तो एड टू कार्ट पे आपकी सेल्स निकल जाएगी और फिर आप उसको बाद में लेटर ऑन सेल्स पे ले जाएं। उससे आपका जो ऑटोमेटिकली सिस्टम है ना वो लर्न करता रहेगा। तो आप ये कर सकते हैं, आपने बिल्कुल सही समझा, आप एड टू कार्ट पे चला दें और एड टू कार्ट पे चलाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो जो है ना आपकी जो दूसरी कैंपेन है कन्वर्जेंस की, सेल्स की, वो ऑटोमेटिकली फेड होती रहेगी। तो वो जो है फिर आपका काम निकल जाएगा। तो आई थिंक जो ये आपने चीज़ सोची, इट इज़ गोना वर्क बिकॉज इट हैज़ वर्क फॉर मी प्रीवियसली, और उसमें से भी एड टू कार्ट में से भी सेल निकल जाएगी। बस आपने फिर उसमें ये मेक श्योर करना है कि आपकी रीटारगेटेड ऑडियंस इंक्लूडेड हो। Yes, सही yes, सही। yes. ठीक है सर, थैंक यू सो मच। Thank you so much, Hamza, for such a great. Thank you so much, Yasir bhai. You went overboard. You went over time. You are still having spark and this level of energy. Hats off to you. So I will request each and every one of you gives a thumbs up, gives a heart to Yasir bhai for delivering such a massive value since last 1 hour and 45 minutes. And you know he is coming out of the way to deliver his wisdom, and even he's the kids are around and everything, and he's still not stopping. So thank you so much, huge thanks to him. And most importantly, connect with Yasir bhai. Check out his Yasir Ahmed MBA.com website, and you will know all the courses, all the mentorship, and whatever he's doing in this digital space. Make sure to check it out, and if you find value, enroll in those programs that he's offering. Super valuable. You are getting the wisdom from, like, the person who has spent, like, 10 plus years in the marketplace, scaling brands, launching from ground up to the taking them up to into the millions and millions of sales. And he's crushing in the UAE market, GCC market especially, and even all over the place. So hands off to him. One last thing I would add is, I have created these sessions with the goal of helping one person to have and learn actionable insights from the experts like Yasir bhai, so you can perform good in your professional life, right? And make a good living out of it. So this is the goal. Hats off to each and every one of you. And I'm also creating a WhatsApp community on the WhatsApp. If you go onto this event page post, in the comment section I have posted the WhatsApp group link, where all the media buyers can come join and share each other's learnings and insights. Once again, one last time, thank you so much, Ahmed bhai. Huge thank you so much from all over the community. And we might Thank have you very this much. maybe later down the road in the week on a specific topic as well, if you. Inshallah, definitely, 100%. Thank you so much, thank you so much, everyone. Take care, bye bye. And Bye bye, make everybody. sure to give a heart before going to especially to Yasir bhai. Thank you so much. Jazakallah khair. Okay, everybody. See you. Bye bye.
Thank you everyone. I appreciate you for being over here.